Yeah. Sorry, we're already running late, 5 to 7 minutes. I welcome you all on behalf of Pradhan for today's webinar on rural livelihood and MGNREGA, to be precise, and the experiences coming out of different states and the emerging scopes and opportunities, and what could be the future pathways to think about and work on MGNREGA. So this is the theme for today's webinar, and broadly speaking, we're privileged to have a set of distinguished panelists and speakers with us today. As the title for this program is suggesting that primarily we intend to listen to the experiences of different states about transforming the MGNREGA policy and practice. And for that, we have with us Shri Kaushik Saha. I welcome you, sir. Shri Saha is from West Bengal, and he is currently leading MGNREGA program in West Bengal state as Commissioner MGNREGA. We also have Ms. Sufia Farooqui, Commissioner MGNREGA state of Madhya Pradesh. Ms. Rajeshwari B, MGNREGA Commissioner state of Jharkhand, and Sri Shravanji from Karnataka. Shravanji is currently serving as MGNREGA Commissioner Karnataka. So in the first session, we'll be listening to I welcome you all, in the first session, we'll be listening to 4 experiences from 4 states. And listening to these experiences will remain incomplete unless until we basically try to do a kind of synthesis and how these experiences can inform our practices on the ground. So on the second, for this purpose, we will have a second session, and for that we have again 3 distinguished panelists. First one, Sri Parshuramji, former Chief Secretary, Madhya Pradesh State. He is with us, and he will be joining us in the second panel. Basirji, Commissioner MGNREGA Chhattisgarh, and Saroj Mahapatra, Integrator Pradhan. So they will be helping us to process the sharing from 4 states and to help us to understand what are the emerging pathways and how we can effectively engage with the MGNREGA program as a whole for strengthening rural livelihood, deepening democracy, and people's participation at the field level. Yeah. And we are also happy to see that more than 200 participants are already joined. A large number of people are definitely from Pradhan who has already joined, and a large number of our CSO partners in Madhya Pradesh. They are also present in the meeting. I welcome you all. Mr. Manas Satpathy, Integrator Pradhan Research and Advocacy Wing. He will be helping us to understand these, to facilitate this entire conversation and take us through these different sessions. I welcome Manas. And finally, Naren. Naren is our Executive Director, Narendranath Damodaran, Executive Director Pradhan. Naren is with us, and I now request Naren to come and formally inaugurate the session and to give us a very brief context behind today's session, and which can basically help us to understand the relevance of this kind of discussion today. So yeah, I invite Naren to come and formally inaugurate the session. Thank you. Thank you. Am I audible, Sahib? Hello, am I audible? Yes, Naren, you are audible. All right, thank you. Thank you so much. Thank you so much, Sahib. I don't think I'm qualified enough to inaugurate a session of this order where people of much higher caliber are present, and we are all eagerly waiting to listen to them. But I'm so happy to see that there's so much of interest in this theme today of how MGNREGA is something that can be a very powerful program to revitalize our rural economy. So I can see that from the number of participants, that constantly the increasing number. A lot of people are attending this program. So let me see, it's my pleasure, privilege to be a part of this program here. I warmly welcome everybody. Thank all the eminent people who are here in this meeting, the MGNREGA commissioners of
of Mr. Anirudh Shravan from Karnataka, Ma'am Rajeshwari from Jharkhand, Mr. Kaushik Shaha from West Bengal, and Sufia Faruqi from Madhya Pradesh, and Mr. Kaisar Abdul Haq from Chhattisgarh, and all above all Mr. Parashuram, who has been a guide of a lot of us, and as is in his official capacity, and even after his demitted office, he's been very much in touch with all our civil society organization partners. So I'm very happy to see everybody here. Back in, I think Manas would remember, about 2000 or 2009, we organized a workshop in Delhi. This was the early days of MGNREGA. It's a program we started in 2005, but by 8, etc., it's still a fresh program. And we had named it interestingly, MGNREGA Beyond Wages to Livelihoods. Now in Delhi, it created a lot of ripples. He said, they were still figuring out how to pay wages properly. So at that time, to talk about livelihoods was slightly out of, what do you call a conception for them, it seems. But nevertheless, we did the workshop, and we had presentations from West Bengal, and we had presentations also from Madhya Pradesh. And I think, sir, it was during, Mr. Parashuram, maybe it's during your tenure, or you're just about to take over as the, Master of Rural Development in Madhya Pradesh. MP had a wonderful presentation at that time. And, MP had thought through the whole program, schematized the MGNREGA into, livelihood programs, the wells, gardens, orchards, dairy program. So there were a lot of development programs they had schematized through MGNREGA very creatively. And there was an integrated micro planning process they had started. Later on, I think even for watershed programs, they started using MGNREGA funds. So there were a lot of creative ideas that had come from MP at that time, and we were very happy to see it. So in that sense, the presentation from Madhya Pradesh and Bengal also. Bengal is a place where we were also working quite closely with the NREGA system. There were a lot of interesting presentations. So in a sense, we were vindicated that yes, MGNREGA has a potential from going not just to give 100 days of wages to laborers looking for work, but the wage can be creatively used to promote livelihoods. And I think in the last 15 years or so, it has really got institutionalized in MGNREGA. So we're very happy to see that something people like us sitting here had started at many years back is actually come back, and in MGNREGA is now really using that the funds available very creative. Now I've seen in the last 10-15 years how a wide set of activities contributing to building the rural economy has been taken up under MGNREGA. So in sense, so that is where so the idea of MGNREGA going beyond wages into livelihoods was really a interesting idea. Now, in fact, we need to think beyond. So my conception today would be that we've spoken about how MGNREGA goes beyond wages into livelihoods. Now, actually, we have to think beyond MGNREGA itself. So going beyond MGNREGA into building a robust rural economy. And MGNREGA, I would say, is in the unique position of being able to drive that process. So how do we use the power of NREGA? Because MGNREGA remains the only people plan-based program. It's a rights-based program. It is a people plan-based program. So around those people plans, how can we converge multiple kinds of resources coming in from different directions? The government makes massive investments in multiple departments. So you have agriculture, you have rural development, forest, tribal, water, you name it, and it is there. So how can all these investments come through a platform that we create in the rural areas using the the trigger of MGNREGA, and it is possible. We have done it, and in fact, many of you have experienced it as well. So it is possible to create, as I would call it, a collaborative ecosystem in the village, where we have the panchayats, the local administration, the community-based organizations, which are now far and vibrant everywhere, the self-help groups, their federations, and the farmer producer organizations that are created. That actually creates the base for a collaborative ecosystem in the village. And among these 4 or 5 kinds of institutions, we can actually converge all these resources, and massive amounts of resources of the government can be unlocked and used very creatively to actually rebuild and revitalize the rural economy. I will not surely get into the details here, but
I think the presentations that follow today and the discussions that will follow subsequently would surely provide us some real practical experiences how this can be done, and this has been done. And I believe from this workshop, we should be able to take off some of those policy directions, which then we must use that policy to then maybe how do in the whole country as it, across the country, because now we have participation from almost all the corners of the nation here. So we can actually create a groundswell which can influence the development programs, rural development programs at the grassroots, using the power of the community. And one more thing I would suggest here is, these are the, at least our own experiences, self-help groups, if FPO, these are all women programs. So actually we have an opportunity to create a rural development drive driven by the women. So that I think can actually set a totally new direction to our rural economy and rural, the social and even the political arrangements. So I have a lot of hope from this meeting, and really looking forward to listening to some very enlightening inputs from each and every one of you. Thank you so much, and I wish everybody all the best for a wonderful program. Thank you. Over to Thanks a Shahid. lot, Marine, just to give us a brilliant start for today. And one thing I missed to say that, I mean, conceptualization of this entire workshop could have been incomplete unless if Sufia ji were not with us. I mean, for designing the entire program and the discussion points, I mean, it was a kind of her brainchild as well. So I also sincerely thank you, ma'am, for being with us and designing the program. And now I invite Manas to take us to the next session and to, Manas, over to you. Good morning, everyone, and welcome to this webinar. As you all know, MGNREGS, even though it was enacted in 2005, it covered all the districts in the country in 2008, and since then it is operational. And this statute, the Act, is held as the largest and most ambitious social security and public works program in the world. Actually, in the World Development Report of World Bank in 2014, they termed it as stellar example of rural development. So that is what is the status that it has achieved over these years. मानस, 1 मिनट का इंटरप्शन जस्ट, कुछ रिक्वेस्ट है हमारे ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स से, थोड़ी सी अगर हिंदी का भी इस्तेमाल करेंगे तो सब लोग ज्यादा समझ पाएंगे, तो whenever it is possible please use a mix of Hindi and English if possible. अच्छा, ठीक है, कोशिश करते हैं। तो ये MGNREGS एक लीगल एंटाइटलमेंट है हमारे रूरल एरिया के लोगों के लिए फॉर एम्प्लॉयमेंट, और एक लक्ष्य भी है इसका MGNREGS का, इट इज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक ponds, canals, livestock assets, etc., so that dependence on such back-breaking unskilled manual work reduces. तो ये नहीं है लक्ष्य इसका कि लोगों को अनस्किल्ड मैनुअल वर्क में ही एंगेज रखना है, बल्कि ये एक स्टेपिंग स्टोन जैसा देख रहे हैं ताकि they can build some such assets जो उनको unskilled manual work में उनका dependence घटाएगा. Over these years, apart from providing economic security and creating such assets, livelihood assets, काफी सारे demonstration हुआ है at different places in the country, जैसे कि to environmental protection के लिए, women empowerment के लिए, migration reduction के लिए, social equity build करने के लिए, तो तरह तरह के demonstration हुए हैं. So actually it all depends on the imagination of the implementer rather than the guidelines of the scheme. That is what has been demonstrated. And we now know that this has immense potential to help us achieve जो sustainable development goals हैं of eliminating poverty and erasing hunger, ये अचीव करने के लिए शायद सबसे पावरफुल प्रोग्राम अभी देश में यही है, with huge allocations.
Actually, last year NREGA में 1,11,000 और crores have been spent. तो ऐसा शायद ही और किसी प्रोग्राम में हुआ है. So that is the potential. And another important thing that happened during the pandemic is that in the midst of this ongoing slowdown, this very program MGNREGA has proven to be the most effective instrument to address the economic emergency that is there in the rural areas. तो ये सही एक समय है जो मध्य प्रदेश स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है to bring some such exciting experiences across the country. Of course, हम लोग 4 स्टेट से लाए हैं और भी ऐसे एक्साइटिंग होंगे, बट 4 एक्सपीरियंसेस ऐसे लाए हैं, 4-5 to the notice of the larger audience. जो आज हम लोग हैं 200 प्लस, करीब 220 प्लस हैं लोग, ताकि हम ये एक्सपीरियंसेस को सुन के समझें कि इसका पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है, और एक पर्पस भी है कि टू एनकरेज अस टू इनोवेट इन आवर ओन कॉन्टेक्स्ट. जो हुआ है उससे प्रभावित होकर हम भी सोचें कि ये तो बहुत कुछ हो सकता है, एंड हाउ वी कैन ब्रिंग इन इनोवेशंस इन आवर ओन कॉन्टेक्स्ट. So broadly, we have 2 sessions today. The first session will have presentations by the state MGNREGA commissioners from 4 states. And the second session will have a panel discussion to build on these experiences and to see a way forward, that how it can be strengthened forward even to address all the challenges facing rural area today. So we'll just see, we'll have a panel discussion. We have eminent panelists. So that is the second session. So I would now like to begin the first session, and I am glad to welcome Mr. Anirudh Sravan, MGNREGA Commissioner, Karnataka, to share his experience of promoting women's participation and natural resource management under MGNREGs. Mr. Sravan is a 2011 batch Karnataka cadre IS officer. Previously, as the mission director of NRLM, he has worked extensively for the empowerment of women's SHGs. And as commissioner of MGNREGs in the state also, he has launched a campaign called Mahila Kayokotsava, महिलाओं को encourage करने के लिए to seek employment under MGNREGs. तो मैं भी उनको आमंत्रित करना चाहूँगा to share his experiences. Anirudh, shall I display your, put your presentation in display, or will you, do it yourself? Yeah, please do it. Please do it. Yeah, very good morning to all the panelists and all the dignitaries who are here. Thank you so much for your kind introduction, Mr. Manas. I'll start with the topic which was given to me with regard to SHG and women participation. And before the presentation comes out, I'll just try to reflect on the context. I hope my voice is audible. Very clear. Okay. So one of the points we've looked at, not just in NREGA, in general, how an economy functions, is what percentage of our workforce is women. And NREGA, thanks to the MIS, we continue to have very good data, very granular. We know we can look at a Gram Panchayat level and understand how many women participate under MGNREGA. And we had tried looking at this. We found a lot of variation across the state. Like we know, India as such is so diverse, and all our states are very diverse, and so is Karnataka. So we found places where women were participating, close to 90% of the workers were women, to places where only 28% were women. So I'll go ahead. I'll explain what we have done on this part. Next slide, please. So in order to bring focus back on the aspect of MGNREGA being a safe workplace for women,
where women can work without worrying about safety of their children or safety of the environment. We had launched something called as a Mahila Kayakotsava. As one may understand, Mahila is a word woman, Kayaka is a Kannada word for work, and Utsava is a festival. So we thought we launched a festival of work for women sometime last year, and we tried doing it by getting SHG groups identified for taking up a survey, a house-to-house survey of in gram panchayats where women participation is low. So in each block, we had asked the BDOs to identify 4 blocks with 4 gram panchayats with the least women participation. Go ahead and identify a good self-help group that can do the survey for us. We trained the group and we sent them from house to house. And on the top right corner, you can see a small the logo that we had used for the campaign. And we also printed stickers to to go and paste on all their doorsteps, saying MGNREG is available. Please make use of it. Do not leave your job card with somebody else. Your job card means X number of rupees per annum if you work for 100 days. So these were the basic messages we give, apart from taking information from them. One thing obviously is women are paid less, especially in the difference is stark in rural areas. And we tried getting data on how much they actually get paid in their village for a day's work in an agricultural field. And we tried to give them the information that NREGA pays you so much, and do you have a bank account? Where is your job card? Do you need a cattle shed? Do you need a goat shed? Information like that. So this became a sort of a demand collection exercise. We did it in 2 phases. The current phase, the current year, we are doing the second phase. The first phase was last year, the current year, but last financial year, Jan to March 15th. And after the SHG does its survey, door to door, fills its forms, there's a summary sheet that is prepared by the Gram Panchayat development officer, and it is discussed at the level of the block and at the level of the district. And the aim was to regularly monitor the percentage of participation of women and try to get more and more women to work. Of course, worksite facilities like providing a creche on the worksite, providing shade, ensuring that people come. If women are willing to work in women-only work sites, we should open women-only work sites for them. We should ensure that the mate is a woman. So these were some of the things that we had taken up. Another very important step we have done in Karnataka is the concept of Gram Rozgar Sahayak, which is there in several states. Unfortunately, did not exist in Karnataka. We continue to operate because we had a robust system of an officer assisted with a secretary in all Gram Panchayats. This was something which was ignored. So we have now taken Gram Kayaka Mitras when we have consciously chosen only women. So all our Gram Rozgar Sahayaks, whom we call as Gram Kayaka Mitra, all of them are women, and we have recruited about 2,681 people. We have given them weightage in terms of women who are present in SHG groups have got a certain amount of weightage, and we have appointed all these people. We have trained them, and they are now facilitating more and more women to come into the and participate in MGNREGA. Another aspect is trying to identify female mates and ensure that our work sites move from being manned to being women. So one reason for this is that if a woman heads a work site, perhaps there'll be more women willing to work and will be openly able to interact and not have issues of having to speak to a man or a person that they have never interacted with. So that is one thing we have done. We have identified the women mates and we have trained them. Apart from that, we give them an incentive of 1 rupee extra as a woman mate. A woman mate earns 5 rupees per person day that she has helped us generate.
versus a man who works as a maid gets 4 rupees. So we've created this small differential, and we have tried to put an onus on getting more and more women in our in sort of worksite managerial levels. Next slide, please. Yeah. So this is how. Yeah. So if you can see in the previous picture, this is how we had SHGs moving house to house and sticking that logo on their houses. Once in the previous slide, I think it was flipped a little quickly. No, the previous one, sorry. The previous one. Yeah. So this is how we had people going door to door and sticking the message of NREGA, where we said there is a guarantee of work to all of you. And we gave them some pamphlets, some material to look at, etc., etc. And we have covered a number of people this way. So our attempt has been to get more women on work sites. Our percentage participation has gone up, but we continue to be a state which can do much better. We believe we have to get more and more women to participate in work sites. And the project, the mission is still on, and we hope to I'm sure we'll be successful in a few months or years. The next issue that I was asked to speak on was what is the focus on natural resource management. And here I would like to just point out how our expenditure on natural resource management has gone up from nearly 60 and mid 50s to almost 82% in the current financial year. And one of the reasons for this is that we have started something called the program to rejuvenate groundwater, Antarjala Chetana, and we had support of NGOs like Vyakti Vikas Kendra and also Foundation for Ecological Security. We've had MOUs signed with them in close to 20 districts out of the 31 in the state. And we have also had GIZ coming in with their planning and capacity building modules. So this is one angle of it, but the onus has been that we have to ensure that the summer months are not used to do something else, but they should mainly be focused on getting water stored and water conserved and harvested. One application which has helped us in this is the Composite Land Assessment Tool and Restoration Tool, which is an app which is freely available. I'd suggest all states to have a look at it. It is done by FES, and for the state of Karnataka, with the geolocation on, engineers have been trained, NREG engineers have been trained to use this and locate water harvesting structures and appropriate strata. So wherever there is permeable strata, you do a certain sort of a structure. Where there is impermeable strata, you don't do any impounding structure. Where there is a semi-permeable strata, you don't do a huge investment there. So whether you store or whether you stop, or these are some of the thumb rules that we have tried to give them. We have also used the services of Karnataka State Remote Sensing Application Center, KSRAC, and they have identified locations for check dams using the watershed maps that we have, and also simple rules on the site for practitioners, like the length of the nala should be straight. We should have the gorge portion should be narrow. The strata should be permeable. There should be no flooding because of the check dam being constructed. It should not obstruct any other natural feature in this place. It should be a sustainable place that way. So these were some of the things that we looked at. Next slide, please. One of our successes in terms of rainwater, NRM, natural resource monitoring, is construction of the multi-arch check dams. And these have been awarded in various forums, including Ministry of Rural Development. These structures have come up in almost 8,000 odd locations. And the arches save us a lot of expenditure also.
So close to 25% of the costs are saved because we don't have to use as much cement and stone. Another structure which we have taken up, next slide please, is the Gabian structure in places where there is gradient, which which streams that have a lot of torrential flow, flow in it with pace. So we have these Gabian structures very cheap, using local material, and we've used Zoom very well, though something unintended consequence of the pandemic has been that we have found new ways to communicate and get people to sit and understand things comfortably, instead of organizing large trainings and other things in halls. So our engineers have been trained on how to take up Gabian structures, how to take up the multi-arch structures. For the multi-arch structures, one challenge would be that we need to have the forms in the shape of an arch available in each block, and for that we have used the admin fund under NREGA. Sometimes we have used other Gram Panchayat level funds, and we have made the forms available. So we own the forms and we use it in worksite and worksite and worksite. Some places there are people who have it for various other works, and that is also being used. Next, please. So another very important structure we have been focusing on is a farm pond, and there are some districts where building a farm pond is a celebration. There are groups of 20 to 25 people who dig farm ponds, and then the day that they get done with it, they have a small puja, and then they have the farmer, even organizes a good lunch for them. So this is one such work site where there's a small celebration after the farm pond is done. So we do a stepped farm pond. Of course, most of you would appreciate that a stepped farm pond cannot be made by a machine, and that has been a conscious effort from our side to ensure that our farm ponds under NREGA are stepped and not, they don't have slopes as such. Next, please. So one structure which is a traditional water harvesting structure, very common in some parts of Karnataka. It is stepped well. I think it's used in various other parts of India also. It is called a Kalyani or a Pushkarini in Karnataka. So this is a picture of one such Kalyani in Ballari district, and this has been set. There are several people who still possess the knowledge of stone setting. There's hardly any cement being used. It's just an exposed aquifer, and people know how, what sort of stone to use, how many layers of what stone, and then how to put the arrange the stone so that the structure is strong and all. And once we have done this, automatically we have villagers coming in and celebrating and singing songs for the water body and things like that. So we have also taken up close to 600 to 700 Kalyanis in the current financial year, and sort of restored them in various parts of Karnataka. Next. This is another such Kalyani. Next. Of course, under NRM, we have also been doing a lot of natural, point recharge structures, and some of them are soak pits, etc., etc. Next. Another under NRM, one of our focus areas during the pandemic was trying to get people to be dispersed and not be located in one site in huge numbers. And one way we thought of doing it is by going ahead and taking up a campaign for digging farm bunds. And this has been very useful, very in demand. And again, just referring to the topic, the first topic, when we are talking about farmers, when we are talking about beneficiaries, we try to put women in the front in all our material, and or a woman and a man. And we didn't make it, exclusive and say that land is always owned by a man and a woman is always the worker or something of that nature. So we've been looking into the finer aspects of how we are portraying these schemes. So the farm ponds have come up very well. We have done about close to 2 lakh farm ponds as on date. This was the figure for last year. Next. Soak pits is something we had taken up in September last year. We did an abhiyan for about 2 months. And not only that's our principal secretary, Mr. L.K. Atiq sir, visiting a soak pit. And this is just how a person, a villager, has also connected his rooftop to the soak pit and is trying to get water
harvested before his home. The another thing has been a community soak pit wherever there's been issues with space in front of a house for grey water management. We've got pipelines connected and we've got a community soak pit built, and the community is using it. And there's several villages where there's not much of an issue of not having dirty water flowing and grey water issues and stuff like that. So soak pits wise, we have constructed close to 2 lakh soak pits. Now this is a picture from Belgaum. Next one that you have shown, yeah, this is from Belgaum district, where a very innovative attempt has been done to construct a series of tanks, new tanks, absolutely from scratch. As you can see, this is how the earth has been excavated and just constructed as a bund, and now we have a tank. So we have completed about 237 plus new tanks in district of Belgaum in the past 2 years under MGNREGS. And there's hardly any cementing material in this. It's mostly rubble, stone, local material, and a little bit of compaction. Next, please. The last issue I have been asked to speak on is how we are doing the capacity building of our staff and functionaries. Well, we have a very established State Institute of Rural Development in Mysore, and they have been very helpful. We have had a number of trainings specifically designed for us. There's been a BFT training, which is of course designed by NIRD and has been running for long. There's a GP Gram Panchayat members. There are about 90,000 Gram Panchayat members in Karnataka who get elected every 5 years. All of them have been trained despite the pandemic. And there's been all our Rozgar Sahayaks have been trained. There have been we have regular trainings for our technical staff. We've used YouTube Live a lot. We've used a lot of sessions where we come online and we use our RDPR Karnataka YouTube channel and try to interact and introduce new concepts. So when we introduce the farm pond and farm bund, we got very good experts to speak on them, and we've got a number of people participate through live chat, and we've been able to interact with them. Next, please. Yeah, so these are some of our training pictures. I think these are the points. Next one, if there's any. So this is basically our strategy on increasing women's participation and putting an onus on NRM management, and also getting some sort of a training ecology in place. So thank you so much. Thank you very much, Mr. Shravan. It's quite inspiring to know the way you have encouraged women to work in MGNREGS in your state, and it's safe for them to work. And I think the percentage of women's participation has increased to 50%. Yeah. Close to 50 now. Yes. So also the efforts to manage the natural resources and rejuvenate groundwater in participation with NGOs, and building the capacity of your personnel to do that, and also using various technologies as you mentioned, the app, are really incredible. Thank you. Thank you. Thank you. I would now like to request Ms. Rajeshwari, MGNREGS Commissioner Jharkhand, to share her experience of creating livelihood assets under MGNREGS in the state with the involvement of civil society organizations. Ms. Rajeshwari is a 2011 batch IS officer and has served as the collector of tribal districts like Garhwa, Ramgarh, Dumka, and she is also known for introducing innovative processes to involve communities for enhancing the effectiveness of government programs. So let us listen from her the experiences of Jharkhand. Thank you, sir. First of all, let me thank you for having me as a panelist and inviting me over for this webinar. While I share what is happening in Jharkhand, it's definitely an eye-opener to see what the other states are doing, what other NREGA innovative projects are going on. So thank you for that opportunity. I hope I'm audible. Yes, yes. Okay. And let me also compliment Shri Anirudh, who is a dear friend, not just a batchmate, but a dear friend of mine, and I'm very keenly watching him.
what he's been doing in Karnataka, and there's definitely some stuff that we are trying to understand and trying to see whether that will work for Jharkhand, because the work that's been going on with regard to women participation and creating community assets, especially the check dams, it's quite inspiring, and so compliments there to Anirudh. I'll start with my presentation to give a brief background about Jharkhand and why we are keen on creating individual assets. Let me, okay. So Jharkhand being mostly agroeconomic, but with small farmers and marginal farmers with small land holdings. We usually see that there is only one crop going on because the irrigation is only around 11% of the cultivated land. People are more dependent on the monsoons for irrigation. So they go mainly for paddy, and barring a few regions, we go for horticulture, vegetables and flowers. Most of Jharkhand has only paddy, which is grown. So you see a lot of distress migration happening. Once that one crop is done, people go out to Bengal, to Bihar and the other neighboring states to work in agricultural farms and other areas. And being in a district till recently and having seen the COVID situation in districts, I also saw that in a remote, in a far off tribal district like Dumka, which I was serving till recently, more than 20,000 people returned during COVID. And most of these are laborers who came back from states like even Karnataka, Maharashtra, Goa, Bihar, so even Delhi. So you can imagine when one district is having around 20,000, there were districts which were having 40,000 people returning. So for the whole state, it's a huge figure. It's a huge chunk of population to deal with. And these are those people who go in search of jobs, who are earning and sending money back to their families. So definitely NREGA has been an area where we could accommodate these people, most of them who now do not want to leave the state, who want to work nearby their families, in their villages. They are looking towards NREGA. So migration and distress migration was one issue why we felt that we need to focus more on individual assets so that people can not only enhance their income, but also have something to do throughout the year and not just monocrop thing. So we also, next please. Another one reason why we are looking at individual benefits is Jharkhand NREGA wages has been quite low. It was 194 by MORD last year, and it was enhanced to 198 this year. And of course, there is a high demand for people in the urban areas. People are getting 350, almost nearly 400 for unskilled labor in construction and other areas. But in MGNREGA, they are getting only around 198. That's like a stark difference. And that was one reason why people did not want to come from NREGA. So the state has now increased by their wages, and state is giving plus 27 over the 198 being given by MORD. So now the wages stand at 225 for unskilled labor, which still is insufficient because the unskilled labor payment fixed by the Labor Department Jharkhand is 333.57. So people are demanding for that, which we are at this point unable to provide. So we think that giving them assets will somehow make up for that gap, will motivate them to go for NREGA. So that was another major reason why we went for individual assets. So basically, even these planning of these projects, the need basis analysis is being done by the Gram Panchayat level. We also have decentralized the whole process a bit
For example, earlier the deputy commissioners were the DPCs for NREGA. Now the DDCs are DPCs. So sanctioning bigger projects is a little more easier. Monitoring has become a little more easier. So we also gave the sanction power to BDOs up to 10 lakhs. The BDO can sanction. Over 10 lakh, it comes to the DPC, to the district, but it has definitely made the whole process a little more easier. Things are getting done faster. The PRIs have been involved in a major way, especially when it comes to planning, so that the right projects go to the right beneficiaries. Even ward members are given the responsibility to monitor, to check that the muster rolls are filled on time. And of course, we've had issues the last few weeks because the panchayat elections have not been held because of COVID. So there has been a little instability, but as a stopgap arrangement, we have given these powers to the BDOs also. So there are issues that we are looking at, but as long as the panchayat institutions are in place, definitely we have empowered them in a major way, and their participation in NREGA has improved. So CSOs and technical institutions are also a major stakeholder for us, especially CSOs in rural areas. Even Pradhan is doing excellent in most of the blocks, reaching out to the communities, not only just building their capacity, but also giving them the technological know-how. So we also have these NREGA Sahayata Kendras, which we are going to revamp in the coming days. There are these social audit units. The social audit is something that we are very keen on, and we haven't been able to do it this year. But yeah, definitely that is giving us, it kind of provides us with a background where we need to strengthen, where we need to give more focus, etc. So next, the state planning cell is playing a major role by way of not just planning, but also hand-holding our beneficiaries, hand-holding our staff, hand-holding the team. Because when you go for individual benefits, one thing is that they are huge in number. Plus, there needs to be a constant push for that into that beneficiary. We are in a state where there is a little lacking. When we see the ownership is a little lacking, be it community or be it individual. Once you give it, they feel ye to sarkar ka kaam hai. They expect that everything is to be done by the government. So you need to push the individuals, you need to push the staff that is involved, so that things get done on time and things get done properly. So our state planning cell does it, and there are a lot of issues that come up. Every beneficiary has his own issue to deal with. Every district has its own issue to deal with. So the planning cell is playing a major role in hand-holding and sorting out the issues that come in. So when we talk about assets, there are assets in various sectors, and the first and foremost I'll be talking about is the assets with regard to agriculture. For example, we are having, like Anirudh said, farm bunds and wells are high on demand in Jharkhand. Jharkhand being a water scarce state with only 11% of irrigated land, this is something that has been proved beneficial to the farmers. And of course, there was an initial hesitancy. People didn't want to give up a chunk of their land for a pond because they have small lands. But once they saw that it is benefiting, there is better yield, there is better harvest, then this is high on demand, and people are now keen to go for farm ponds and wells and dobas. There is also the horticulture plantation and MGNREGA nursery, which I will talk more in detail in the coming slides. Next. Livelihood, we have been giving this for quite a while now, and mostly poultry, goat and cow sheds. We are converging with the agriculture and the animal husbandry department, because every year thousands of beneficiaries are given cattle, they are given goats, pigs and even poultry.
And keeping them, of course, becomes an issue for a beneficiary when he's got a very small house and he's got no asset. So that's where NREGA comes in. So far, we have given close to 2 lakh of these cattle sheds and poultry sheds to the people. And this has really helped them take care of the animals. And, it's just giving them an additional benefit. So livelihood in livestock asset creation, there was one major issue where we felt that, maintaining the labor material ratio would be a little tough. So we did pull back a little bit in last 2 years, but now again, we are focusing more on these because the government has been regularly giving cattle and poultry to the beneficiaries. So it's kind of a focus point for Honorable CM Jharkhand also, that the livestock that is given to people should be looked after properly. So we are now converging with the Agriculture Department and giving it to people who have benefited from their department. Those who are getting from their department, we are giving the cattle sheds to them. Then there is also the vermicompost, NADEP compost pit. These are another, I think, areas where people are now high on demand. There are many people who are solely dependent on these bits for their farms. So this also we have given to about 1,02,000 plus people so far. So these are huge numbers, and to monitor these huge numbers is actually a challenge for us. And it's very imperative that quality is maintained, because if there is no quality, then you don't get to see these assets, say 2 or 3 years down the line. So we are focusing on the quality. There's a lot of training that goes in, even to the beneficiary, to the staff involved. And now slowly we are seeing that the community is more open. They are also understanding that, yes, if it is done well, then it is going to be sustainable. So we've been kind of able to, work well in this area. And when we talk about convergence, we are converging this. So this is some data on all the sheds that I was talking about. You can see that cattle shed, we've given almost 68,283, of which 51,486 are completed. So these figures are huge. Even compost pit, it's 1 lakh plus. Goat shed, it's 1 lakh plus. So definitely these assets are playing a major role in making things easier for our rural population. Next. So this is a farm, Dobha, which I was talking about. It's already been spoken about by Anirudh. So I'll not dwell much on it. But yeah, I would like to point out that the initial hesitancy that was there is not there now. People are going for this. And not only has this been helping them in their agricultural activities, but it's also recharged the water table in those areas. So you can see that people are now understanding the whole concept of recharging your pits, of recharging the groundwater level, what water conservation is. So especially CSOs are playing a major role in water conservation and water harvesting in Jharkhand. So you can see that we are also going for a SRI technique of paddy cultivation wherever there is water available, wherever dobas are made well. So you can see a beneficiary in his land. There's a doba behind him, and he's in his land. Next. These are also the figures: 5,80,000 wells and ponds so far. So you can imagine how big of a challenge it is for us to be able to see that all these are actually found on ground, actually visible on ground. I think that is where the challenge lies for us when we are talking about individual benefits. Next. These are some more pictures from the field. Again, even we go for the step ponds where machines cannot be used. Of course, there were incidents where some kids drowned in the farm ponds, and there was quite an issue. So now we have a compensation fixed,
And we have also come out with guidelines where it is said that, you know, there needs to be a proper signage with bamboo poles, with red flags. Implementing that is, of course, a challenge. But yes, people are now more aware, and there is a lot of IEC going on safety precautions while working in dobas, and for the rural public. It's something that the community has been sensitized about. Next. So Birsa Harit Gram Yojana, it was begun around 4 years ago. And you can see that till now we have 60,306 individuals. Basically a fruit orchard with fruit trees and timber trees. In fact, you can see in one picture, you can see the mango trees, and there's also some crop rotation going on there. They go for ginger, they go for green peas, maize, and other such crops along with the mango plantation. So now that they have an asset to look after, they keep revisiting it. Earlier, most of these lands where these orchards have been made, they were barren and they were dry. But once these saplings were planted, they were given this asset, they keep coming back to look at it. So they thought, well, why don't I just go for another crop? So you see, most people who would not have crop rotation earlier, they are now going for 1 or 2 crops in those orchards, in those plantations around the year. And there's also been great progress in this. People who had planted 3 years ago, they are now getting the harvest of mangoes. They've been selling it in the markets. So we know that this is something big for Jharkhand. The individuals are now finding that this is not only just giving them an opportunity for a livelihood, but it is also helping them go for crop rotation, because there is availability of water, there is a vermicompost. So it's multifarious. And this is another scheme which is very keenly monitored by the CMO, because Honorable CM is into green initiatives, and this has played a major role for people to also go for this project, Birsa Harit Gram Yojana. It's a 5-year project. So it's not that once you give that project, you just forget all about it. You have to handhold that individual for 5 years. There's a maintenance, operation and maintenance cost inbuilt for the 5 years. There's a Bagbani Mitra. You can see 8,700 Bagbani Mitras are trained to look after these orchards. Next. So Didi Bagia. This is also another initiative that we took up in convergence with the Jharkhand State Livelihood Promotion Society, which is basically the society that caters to the SHG women groups in rural Jharkhand. So what we did was we identified groups, trained them on how to come out with a nursery. They were given materials. A component of this was given by JSLPS. The labor component was given by NREGA. And now we have 392 nurseries, which are having around 30 lakh timber seedlings and 10 lakh horticulture saplings. And what is happening now is it is these nurseries which are catering to the need of our Birsa Harit Gram Yojana. So we don't have to worry about where these plants are going to go. We don't have to worry about market linkages for them. It is going to be consumed by us in our Birsa Harit Gram Yojana. And apart from that, even private people, private farmers also buy from them. So this is going on as of now. It's a recently taken up initiative, just a year old, but it's quite popular. So these are some other convergence initiatives that we've taken up. Sprinkler systems are given not only by the agriculture department, but even the welfare department gives it to the SC, ST community farmers. So whenever we give an orchard, we try to link them up with the concerned departments so that they get those additional benefits from the other departments. Next. So these are the mates, the SHG mates, Saki mates, women mates that even Jharkhand has been promoting
kind of increase the women participation in NREGA. It is, as of now, it is 44%. And we are now focusing on how to increase the participation of women, and getting mates, women mates, has definitely been beneficial for us. A lot of them are getting new women enrolled, they're providing them job cards, giving them jobs nearby. So we are hoping that in the next 1 or 2 years that we will be able to at least reach, say, 47 or 48%. Next. This is another interesting project that we took up. This is a Didi Badi Yojana. It is a backyard nutri garden project where women were the benefits, Didi. And again, this was done in convergence with JSLPS, Jharkhand State Livelihood Promotion Society. The fertilizer and the material component was given by JSLPS. The training was done by JSLPS, and the labor and other needs were catered to by the NREGA office. So basically, this was given to women, mostly lactating women, pregnant women, households which had adolescent children, because of course malnourishment is a major is a huge issue for our state, where we have nearly 40% malnourishment going on. So in this, we not only gave them a nutri garden, but it also gave them I think around 27 days of person days. So while they worked on their nutrition garden, they also got paid for that labor. So it is like a double benefit scheme for them, that along with the asset, they're also going to get, the family is going to get PDs generated. A small 2 decimal 2 cent of land wherever was available. You can see more than 2 lakh households were given it, and our target is 10 lakh by 22, which is a little tough to do, but yeah, but it's going good, and there's a lot of demand for it going on. And once they see that at least for a few months this nutrition garden is catering to that household, they don't sell it at the market. It's for their own household consumption. When we speak to beneficiary and we ask them, what do you do with all those vegetables, they say, nahi, hamare ghar mein hi wo khapat ho jata. Every member of the family gets to get some form of nutrition from those gardens. They don't, it's for their own self-consumption. And this is also something that I think we've been keen on in the last 1 to 2 years. So in the coming days, definitely we are focusing on women households, we are focusing on women beneficiaries, and we hope that this will also kind of increase the women participation in NREGA, which is as of now standing at 44%. But yes, the individual benefits are easy to give because there is a high demand for this, but it's a little challenging to look after, to monitor. And as I said, people expect that sab sarkar aake karega, and they expect that things will be done, easily. So there is a little bit of hand holding involved in this. Plus, when we talk about projects like Birsa Harit Gram Yojana, where you are having thousands of hectares of mango orchard coming up, guava and mango are mostly the trees that we are looking at. So 3 years down the line, 4 years down the line, when all these orchards start yielding, when they start harvesting, where is all that product going to go? So eventually we'll have to look at how to link them up with with market linkages, with say go for food processing of some sort for these products. So I think it's going to be an interesting development in the future, and our state planning cell has been working out on how to make these successful, because NREGA, the public perception on NREGA is not very good. They feel that beneficiary or the last mile is we're not able to reach the last mile. So when we are going for individual benefits, definitely we are seeing a paradigm shift in how people are perceiving NREGA.
They now feel that yes, it is by the people, of the people, for the people. And for a state like Jharkhand, rural economy is, I think, more than 85% based on NREGA. So definitely individual benefits is something that we were focusing on. And I hope that it will yield the results that we are hoping. And we are also looking at other states. Now we are thinking of even, focusing a bit on the community side of, assets, because we want both to go hand in hand. That's the story from Jharkhand. Thank you for giving us this opportunity, and I hope it has been beneficial to all of you. Thank you. Yeah, thank you very much, Ms. Rajeshwari. It is quite motivating to know the way the state has created varieties of individual assets, including orchards, nutri-gardens, and whatnot, to reduce the distress of rural population, including the returnees, the way you share that. It's not easy to plan, implement, and monitor individual assets at such scale, And in addition, we're still learning actually. strengthening the state planning unit in addition again to handle the community and build their ownership also is quite amazing. And you said increasing the wages and smoothing the implementation process are also important aspects that we have worked on, and it must have increased the effectiveness of the program. So that's quite remarkable. Thank you. Thank you. Thank you, Rajeshwari, for your kind words, if I may intervene. Very nice to see you. Nice to see you. So I would now like to request Mr. Kaushik Saha, MGNREGS Commissioner, West Bengal, to share his experience of river rejuvenation and soil health improvement through MGNREGS for impacting livelihoods of rural communities. He has served in the government of West Bengal in various capacities. He was previously the collector of Kuch Bihar district when the district was ranked first in geotagging the assets created under MGNREGS. And in 2019, again, West Bengal received the award for facilitating convergence for livelihood augmentation under MGNREGS because of his remarkable efforts. Mr. Saha is an alumnus of IIT Kharagpur, so we have an alma mater in common. He has also earned a master's degree in public policy analysis from Australian National University. Yes, welcome, Mr. Saha. So thanks a lot, Manas. I look forward for the presentation, and I will be sharing the screen from my side itself. Okay, that's okay. You have to unmute yourself. Is the screen visible? I mean, am I? You are audible, but the screen is not yet visible. Okay, just hold on. Yeah, now it's coming. Yeah, now it is coming. So I'm audible, and Yes. you can view the screen, right? Yes. So thanks for the lovely introduction. I warmly, am very appreciative of the words of Mr. Manas, Mr. D. Narendranath, who is the Executive Director of Pradhan, and Mr. Anirudh Sawan for his excellent words on, highlighting Karnataka. Madam Rajeshwari B for, the excellent improvement Jharkhand's, I mean, the enormous strides which Jharkhand has been taken, and we are following from the MIS. Madam Sufia Faruqi for the excellent, convergence of the states
in organizing the workshop, and moreover to Mr. R. Parasuran, the ex-Chief Secretary of Madhya Pradesh, Mr. Kaisar Abdul Haq of Chhattisgarh, and Mr. Saroj Mahapatra, and all the panelists, dignitaries, and participants, a very warm welcome. We know that West Bengal has traditionally been a melting pot of cultures, and last year also, Mahatma Gandhi NRG has provided work and jobs to more than 6.46 migrants. I mean, this has been the case for all states, cutting across all segments. The major policy interventions will follow, and in NREGA we have not, put all the proverbial eggs in one basket. So these are the basic schemes of the government in addition to NREGA, because it's more of a consolidated basket of schemes, not only NREGA, which is catapulting the state to newer heights. So I am not going into the details of the scheme, but say number one, which is Akanksha. Akanksha is basically a scheme for the civil servants society. I mean, they are giving land, they are giving flats to stay within the government, by the government, and which the ownership is with the civil servants. So, this builds an ecosystem for the civil servants to continue serving the state with later glory. So there are other schemes also, which I'm not, diverging into because it will kill time. So the plethora of schemes in NREGA is, phenomenal in West Bengal, and we have started early in providing Usharmukti, Matishishti. These are all places where you have, drought states, places with little waterfall, having lateritic soils, where intervention of water, groundwater, is very essential. Now, starting from, say, IBS, PMAY to roads, culverts, mangroves, Miyawaki forests, fruit orchards in schools and college institutions, the amazing paradigm of schemes is unparalleled. We all know that, it's the greatest poverty alleviation scheme on earth, leave alone the sub-Saharan Africa, leave alone any scheme of the government of India or the government in any state. It's the greatest scheme, the greatest driver of schemes in India. And technology has been a major stroke which has given the drive. Still West Bengal has formidable challenges. We have to address the tensions, pressures and falls which every administrator has to deal with. We have to continue and modernize, diversify our annual action plan, build assets, human capital's development. With a staggering population of more than 10 crores, an area of almost 90,000 kilometers square, the commissioners of NREGA are shaping destiny. They are creating economy, and with their thinking, the state is attaining new heights, new places. Before I get into the brass tacks of Usharmukti and Matishishti, let me share a very personal story. It's a personal anecdote. When I was collected Kuch Bihar, incidentally, we got 3 awards in a row. I mean, the one was spoken of by Manas. The next 2 years also, Kuch Bihar got the best awards in India. So, when we get awards, there is always a central team which comes and visits the district and sees whether the work you have done is grounded or not, whether it exists on the ground. So there's a very personal story which was the central team when they were visiting. There was a woman who was, in the field displaying her poultry. The poultry which had say birds which were almost 1,000. And this lady, in course of conversation, the central team learned that she has lost her job bird. So it was quite natural for the central team to ask her that, why aren't you applying for a new job card? So what she said was the quote of the day. She said that I don't want a new job card because I have had what NREGA has given me. I have learned what livelihood is, and whatever the push, the nudge, which was required for me was given by NREGA. So, with the basic idea in mind that NREGA cannot drive you for years or centuries down the line, we have to think ways and means in order that, we think of the next, scheme or next way in order to move out of NREGA.
So Ushar Mukti is salvation from barrenness. We are very grateful to Pradhan and BRLF, and we have a host of other NGOs who have shared with us these issues, and we have driven these schemes in districts of West Bengal, which from the lowest ridges of the Chota Nagpur plateau. Some are a continuation of the Jharkhand areas also, say places like Purulia, Bankura. And they are a major part which constitutes the so-called Jungle Mahal region also. So overall, these regions are the poorest part of West Bengal, and agriculture is majorly subsistence based. So we have dry uplands with shallow soils, upper midlands with shallow and deeper soils, and these have been worked out area by area, square foot by square foot, involving CSO as partners, capacity building, community facilitators, Bhara Sevaks, who have given the cutting edge for the ridge to valley approach. Now, Dhara Sevaks are community resource persons or the NRG supervisors who are trained on watershed principles. So the major geohydrological challenges of the watershed area, needs of the integrated NRM planning, water budgeting, implementation through NRGA, with the trained rural NRM experts who acquire the NRM knowledge to help the Gram Panchayats to identify proper NRM schemes and improve the quality of implementation of those schemes. So we know that we are continuously monitored on the NRM, on the agri and agri-allied activities by the MIS. We have sufficient knowledge of what NRM is, Natural Resource Management is. Now, we are building on those lines. And if we focus on what Ushar Mukti is, it covers 6 districts, 55 blocks, 472 Gram Panchayats, 2,000 plus watersheds, 10,000 plus mojas, and so many hectares of land. These are all basic stats. And what we have done is, this is a district-wise percentage of the command area of the various districts. And you see that, we have a major chunk of area in Paschim Bardhaman, in Purulia also, 27.29 in Purulia. They are traditionally the most backward places of West Bengal. So the Ushar Mukti journey is mostly built on perspective building, training, exposure with the GP and block teams, CSO teams who have been very carefully and handling and planning. Especially BRLF with Pradhan has been excellent in community services, watershed detailed reports. With their help, with the help of Pradhan, we have had 1853 watershed DPR preparations and MGNREGS system strengthened from GP to the state. In 2009, there was implementation on all watersheds, regular review, monitoring, convergence, focus. 2020. The block core team set up for improvement in implementation process, more than 150 model watershed development programs, more convergence. So the major developments through Ushar Mukti, as I said, Ushar Mukti is basically removing barrenness, barrenness through plantation species, where large number of plantation patches were developed, more than 1.5 crores forestry species and 17 lakhs improved fruit tree species, created positive effects in the environment. And the ridge to valley approach, which I must believe that everybody is familiar by now, has taken a very scientific and technological approach to whatever has been done. Now, the crop diversity and livelihood diversity, as was mentioned by my previous speakers, in agriculture, livestock, fishery, horticulture, forestry, etc., have been initiated by the community, and the potential of Kharif crop assurance also increased. Now, major highlights you will find in the Ushar Mukti is the total leverages achieved, total area treated, total area where cropping intensity has reached more than 150%, etc. So these are, it's a similar kind of pictures which we are displaying also. I mean, in addition to what Karnataka and Jharkhand has shown. So it's almost the same ecosystem or the same part of the system we are into. So these are
similar pictures which we have already seen, but in a different way here, presented here. This is, the left is in Kashipur and the Pura, Puncha. I mean, these places have developed greenery in leaps and bounds, and as you can see, the ridge to valley approach has helped us and helped the development in major ways. So this is a particular 30-40 model horticulture which has been promoted extensively by the CSO partners, and drone pictures have carefully shown us that the improvement has been miraculous. Check dams, as Karnataka has also showed us, it's almost on the same patterns. So these are 17 lakh high value horticulture plants in fallow lands benefiting 27,000 households, etc. So this has been a part of rejuvenation of soil moisture conservation activities also, as we said in the 1.5 crore plantation. So these are all typical NREGA pictures. They are genetic pictures cutting across all over India. So these are the similar pictures as you will find out, and I'm not reading much into it. Everything is picturized. So double cropping in the monocrop region is a big difference to the farmers, and kharif crop assured in 1.75 lakh hectares has been a major fallout of this event of these. Now, livestock rearing, catching fish, etc., has been a major thrust of these areas also, and as you can agree that economy has shaped the places. So as we learn that from whether it's from William Easterly, Jeffrey Sachs, or Amartya Sen, that we have to get out of this poverty trap. We have to get out of bad health, bad debt, bad luck. So this is the only place, this is the only intervention which can help us go about it. So Marty's Fish Tea, this is also another scheme which is running side by side, which is from the West Bengal government. This scheme, develops fallow lands in the Pashchimanchal or the Jungle Mohol districts of the western districts of Bankura, Purulia, Bhopal, Jharkhand, Paschim Bardhaman, Paschim Manipur. These are all western districts of West Bengal. So this is a scheme which is continuing for 2 years, and this also aims to exploit 50,000 acres of fallow land commercially that would benefit 2.5 lakhs. In addition, we also have another spring rejuvenation scheme which is in north of Bengal, I mean North Bengal we say, where spring rejuvenation has been an excellent intervention. There are, we have tested the quality of water which is running from the springs. I mean the original quality, which was full of bacteria, and it was not fit to be drunk. But with our interventions and with the interventions of CSO, with scientific cultivation of water, you could say, the water quality has been much improved, and we have done a public health engineering testing of the water sample also, and we are fit for drinking. We can store the water also in those places where there is extreme water scarcity in places like Darjeeling, Kalimpong, Birsa, which are extreme north of West Bengal. So this is typical pictures of Marty's Fish Tea, where it's almost the dryness, the barrenness has been converted to green. So I'll, this mostly I'm depicting some schemes here, which are a bit different from the others. Suppose in the land of Lalit Mohan Mondoland, we have a pearl cultivation in convergence with the fishery department. I'm showing this because this is a bit unique, and this is a bit different from the other schemes we can do in NREGA, and the cost is not it's not phenomenal or astronomical. We have put it down on paper. So to the extreme bottom right, we find the central team of Mr. Charanjit Singh, who has been examining whatever we are doing in the Gram Panchayat, and he was very appreciative of the efforts of West Bengal. So this is another
place in Birbhum, which is the birthplace of Rabindranath Tagore. So here it's a rural heart in Kachujor, where we have a livelihood impact, and the difference a rural heart can make to a growing economy has been depicted. So these are some snippets from the additional chief secretary to the government of West Bengal in Panchayats and Rural Development, to the person whom I report to. So he has his Twitter handle where he sometimes just puts in some snippets of what is going on in West Bengal, and I will just briefly skim you through these slides. I've not put in whatever is available, but just small places, small stories where we are showing that whatever has been done in Purulia or the Usha Mukti districts is for display. So these to the left are the strawberries which have been possible. So as per imagination, everything is possible. To the right is we have East Midnapur beneficiaries. The project which Karnataka and Jharkhand also said about nursery formation and development of nurseries for better livelihood and greenery. So this is a Miyawaki forest technique. I believe this is done by other states also. And in this particular, the Miyawaki, this is done in Murshidabad districts, which is a forestation technique to native species and multi-layered forests. To the left is fisheries, farm ponds, which have been, these fishes, this catfish variety fetch, huge amounts in the market. It's presently 1,000 rupees per kg. It's quite a driver of livelihood. Catfish ponds in Murshidabad. So, next slide. This is cashew orchard in MGNREGS, watershed development in Bankura, which is another, Ushar Mukti and the Mati district. And to the right is again Murshidabad success story, fruits from ICR. So this is a very unique project, the mangrove plantation, 5 crore mangrove plantation in Sundarbans, which has taken a big flip because we are prone to natural disasters like Yash and other cyclone, hurricanes, which every year, say during the month of April, May, we are hit by such natural calamities. So mangroves are the most effective way to prevent such calamities, and they have done it also for years. So now we are trying to rejuvenate with seedlings and saplings of mangroves for more and more places, so that the impact of the storm, there is a natural resistance to the storm impact. So that is all. I believe I pushed the agenda of water rejuvenation in all the districts, all the barren districts, as well as the places of North Bengal where spring rejuvenation has also taken place for safe and clear drinking water. So thank you very much from West Bengal, which has been a great learning lesson from all of you. Thank you. Thank you very much, Mr. Shah. The way you have conceived Usar Mukti and Martyr Srishti and promoted them in collaboration with civil society organizations in your state to rejuvenate village resources at a scale, the scale that you talked about, thousands of hectares, and increase cropping intensity to around 150% and reduce people's dependence on MGNREGS is really quite fascinating. Thank you. Sure. I would now like to request Ms. Sufia Faruqiwali, MGNREGS Commissioner, Madhya Pradesh, to share her experience of encouraging the participation of women and their SSGs in the planning and implementation of MGNREGS in the state. She is a 2009 batch Madhya Pradesh cadre IAS officer. She is known for making government policies and programs benefit the really needy people. She has served as the collector of Mandla district and also as MD of Civil Supplies Department.
She is quite committed to make MGNREGS effective not only to guarantee wage employment, but also to create the most required livelihood assets for inclusive as well as sustainable rural transformation. So organizing this webinar is one of the manifestations of our intention. During the devastating COVID-19 pandemic, the state of Madhya Pradesh provided employment to the highest number of people under her leadership. She is also a champion for empowerment of women and is constantly creating space for greater participation of women in MGNREGS. Yes, madam. Yeah, thank you very much. And thank you, Pradhan team, for supporting this entire initiative, and all the members, all the participants who have conceded the time also to join and share the experience. Since we are very, very much out of time, so I'll try and make it very quick. And I have a very, very long PPT also, which I would request you to please share. I'll skim through the PPT in a quick way and then come straight to the point that I have been asked to talk about. We understand very clearly that NREGA is about employment guarantee and asset creation and livelihood generation. These three things is something, as it was already mentioned, and I have my very senior and very respected senior from my cadre also on the panel, Parshuram sir. It was during the initial 15 years, I mean, it's almost 15 years or 17 years to the scheme, that Madhya Pradesh started off conceiving NREGA in MP as a livelihood creating scheme rather than just what has been popularly called, and we discussed the other day also, a dole hole scheme. It is not a doling out and digging up and redigging up, temporary structures and providing relief to people. So in MP, it was never a dole hole scheme, but somewhere down the line in the past couple of years, I think we lost a little bit of steam on that, and we became more of, like providing the immediate relief, which nonetheless, I would still say my understanding of working in NREGA remains that the act is meant to be a relief act primarily, first and last. Yes, we are at that stage, and because there are huge investments from Government of India happening in this scheme, and also our experience of the pandemic with so many people returning back, our experience has been that yes, we can transform this into a greater livelihood generation scheme. And when it comes to livelihood generation and asset creation, somehow I find the role of women becomes very, very significant. I would request if my PPT could be shared. It is a little easier to talk with a PPT. I'll just try and make it very, very quick. So when we talk of livelihood generation, the role of women becomes important because women, I mean, that's okay. We have heard very often that women bring in more transparency. They are empowered. There's greater value to the asset that is created. But there are other sides to it. We have to also understand that, as was mentioned by Rajeshwari, that the wages are still very low at 193 per day for the task. It is a very small amount. It is lowest in the country along with Chhattisgarh. MP and Chhattisgarh happen to have the lowest wages. So I don't think are very effective in managing migration with that kind of wages. But then, yes, we are very effective in supplementing rural incomes for the women who are left behind and men when they migrate. There are cases where even families migrate completely, but when women stay behind, they have to have a viable source of income so that the entire family doesn't begin to migrate. Manas or Sahab, is my PPT not available? Yeah, ma'am, just give me 1 minute. Okay, sure. Thank you. So one is that we have to accept that there is a certain lacuna. We need to increase our output in terms of labor employment. We are already very high, and there have been several questions on how did Madhya Pradesh get such a high labor engagement in the last 1 year. And of course, there have been doubts, but with so many Government of India teams coming and seeing the ground truthing the structures that we have been making, so there has been satisfaction and acknowledgement that our increased dissemination of wages, increased labor has also translated into asset creation.
Here in my last 1 year's experience in NREGA and otherwise in the last few years of working in the field has been that we need to increase women in supervisory roles. We have talked a lot, amply talked about. I'll skip the first few slides. These are generally about, they give the description of what Madhya Pradesh is like. The objective I've already discussed in short. We can go ahead, please. Forward, please. So these are the key features of the act which are very well known to everybody listening over here. I'm sorry. We were supposed to make a mix of Hindi and English. I've got a prompt once again. नरेगा के जो key features हैं कि उसको demand driven होना चाहिए, उसको employment 15 दिन के भीतर देना है, समय पे वेजेस का भुगतान होना है, कम से कम 1/3 महिलाओं को इसमें वेज दिया जाना है। ये ऐसी चीजें हैं जिससे हम लोग सब वेल वर्स्ड हैं, हम लोग बहुत अच्छे से इसको जानते हैं और समझते हैं क्योंकि एक्ट में यही लिखा है। पर जैसा कि अभी अनिरुद्ध ने भी कहा कि उनके यहाँ 50% के आसपास है, हम भी 40-45% के आसपास हैं, बट हम व्हाट आई फोरसी इज कि मध्य प्रदेश में भी ये जैसा कर्नाटका का टारगेट है कि 80% या कम से कम 75% महिलाओं को जब हम इन्वॉल्व करेंगे लेबर में, तब हमारा कम्युनिटी और इंडिविजुअल एसेट जो है बेहतर क्रिएट होगा। सो मेरा कहना इसमें एक जो मेन ड्राइविंग पॉइंट है मेरा इस पूरे पीपीटी का, वह ये है कि अगर इस स्लाइड की भी हम बात करें, की फीचर्स ऑफ नरेगा की भी बात करें, तो हर फीचर में विमेन पार्टिसिपेशन को हमको अब शायद नरेगा के वर्जन 2 में, नरेगा एक पार्लियामेंट्री एक्ट है, इसमें कुछ यदि हम परमानेंट चेंज चाहते हैं तो इसको हमको पार्लियामेंट्री लेवल पे ले जाके इसमें संशोधन लाने पड़ेंगे। वहां हमको बिल्ड इन करना पड़ेगा महिलाओं का पार्टिसिपेशन एज पार्ट ऑफ द एक्ट। इसको अब अगर हम स्टेट्स के इनिशिएटिव या कमिश्नर्स के इनिशिएटिव पे छोड़ेंगे या कुछ स्टेट सर्कुलर्स या स्कीम्स के बेसिस पे छोड़ेंगे तो हम महिलाओं के पार्टिसिपेशन को उतना बिल्ड इन नहीं कर पाएंगे। और जब मैं महिलाओं की बात करती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों ने टॉपिक महिला दिया है, मैं महिला के साथ में जो हमारा एल्डरली या बुजुर्ग लेबर है उसको भी शामिल करती हूँ, क्योंकि एल्डरली लेबर के पास बहुत कम ऑप्शन होते हैं आय के साधन के, वो उसको वेजेस में बहुत कम ऑप्शन होते हैं, वो घर का एक रिडंडेंट और एक बेकार मेंबर बन जाता है जिसकी वजह से उसका एक्सप्लॉइटेशन भी होता है। यही महिलाओं के साथ होता है और यही होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो हम नरेगा के डिस्कशन में बार बार छोड़ रहे हैं, जो कि एक्ट बात करता है, वह है डिसेबल्ड लोगों की। इसमें मध्य प्रदेश सरकार का और सर्कुलर्स हमारे जो जीएडी से जारी हुए हैं विभिन्न समय में बहुत क्लियर एक इनका हमारा अप्रोच है कि डिसेबिलिटी का प्रतिशत जितना ज्यादा है उस व्यक्ति को शासकीय स्कीम्स का, चाहे वो रिजर्वेशन हो चाहे वो नरेगा हो, उतनी ज्यादा आवश्यकता है। जबकि हम लोग का कॉमन अगर एक अंडरस्टैंडिंग, जो मास कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिसे कहा जाता है, जो कि मास कॉमन सेंस कई बार बहुत गलत होता है, ये एक हमारे को गलत चीजों को बार बार परपेचुएट करने के लिए हम सोचते हैं कि नहीं, आम धारणा है। हमारी आम धारणा यह है कि जिसकी डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा है वो तो बिल्कुल ही नाकारा है, वो तो बेचारा है, अब उसका जीवन भी बोझ है, और जिसकी डिसेबिलिटी कम है उसको हम कहीं छोटे मोटे कामों में इन्वॉल्व कर लेते हैं, वेदर इट इज अबाउट रिजर्वेशंस इन परमानेंट एम्प्लॉयमेंट और इट इज वेज जनरेशन एम्प्लॉयमेंट इन नरेगा। तो इसमें भी आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे जो सीओ जिला पंचायतों की टीम है वो डिसेबल्ड लोगों का आइडेंटिफिकेशन जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए होता है और उनको नरेगा में इन्वॉल्व करने पे एक्टिवली काम कर रहे हैं कि ऐसे लोग नरेगा के नेट से बाहर ना छूटे, इनको आवश्यक रूप से वेज एम्प्लॉयमेंट मिले और एल्डरली को मिले और विमेन को मिले। तो जब मैं विमेन की बात करती हूँ तो समहाउ मैं विमेन, एल्डरली और डिसेबल्ड को एक साथ बोलती हूँ, दो इट इज टेक्निकली इनकरेक्ट, बट आप लोग को एक बार इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो जो चीज महिलाओं पे लागू होगी वह चीज एल्डरली या बुजुर्ग हमारे लेबर पे भी लागू होगी, क्योंकि बुजुर्ग के हमारे पास कोई आय के साधन नहीं है, और डिसेबल्ड के लिए होगी क्योंकि डिसेबल्ड जिस व्यक्ति परिवार में होता है उस परिवार के ऊपर जो उसका आर्थिक बोझ होता है वह अत्यधिक होता है। तो वह परिवार 100 दिवस पूरे करने के लिए प्राथमिक होना चाहिए, वह परिवार डिसेबल्ड लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए प्राथमिक होना चाहिए। और ये जो हमारे की फीचर्स नरेगा एक्ट के हैं, इसमें कहीं ना कहीं आवश्यकता है इस मैटर को, इन इश्यूज को लेके इनबिल्ड करने की, चाहे कि हम इसको एक अमेंडमेंट के स्वरूप से अपने पार्लियामेंट्री एक्ट में इंक्लूड करें। नेक्स्ट स्लाइड।
बाकी ये जो अगले स्लाइड में मैंने पॉइंट्स दिए हैं, ये सारे पॉइंट्स भी हम सारे स्टेट्स इसमें काम कर रहे हैं ऑलरेडी, बट एट द सेम टाइम whether we are talking about tackling water stress or curtailing distress migration, we are talking about creating community assets, we have to understand that involvement of women, elderly and disabled in all these things is extremely important. ये एक्ट के की बिंदु हैं, इनमें हमको इन तीनों कैटेगरीज को जब हम इन्वॉल्व करेंगे, एससी एसटी को मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, नॉट दैट कि वो मार्जिनलाइज नहीं है या उन पे फोकस नहीं होना चाहिए, पर एक्ट ऑलरेडी एससी एसटी पे पर्याप्त फोकस करता है, एक्ट के सब क्लॉजेस में वो बिल्ड इन है। हम अभी वर्तमान में वेजेस भी तीनों की अलग दे रहे हैं, जिसको लेके थोड़ा सा फील्ड में दोनों प्रकार के रिस्पॉन्सेज हैं। हम लोग शायद एज एग्जीक्यूटर्स बहुत खुश नहीं है कि एससी एसटी ओबीसी के खाते अलग कर दिए गए हैं। एक ही कार्य पे एक ही समय काम करने वालों में ओबीसी व्यक्ति को बाद में वेजेस मिलते हैं, एससी एसटी को पहले मिल जाते हैं, परंतु ये कहने का बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है कि वह मार्जिनलाइज नहीं है। एससी एसटी मार्जिनलाइज है, मगर नरेगा एक्ट का जो सेफ्टी नेट है वो एससी और एसटी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है, मगर विमेन, एल्डरली एंड डिसेबिलिटी को हम ने शायद अपने स्टेट्स और अपने स्टेट्स की एग्जीक्यूशन कमेटी जो टीम्स हैं, जैसे हमारी नरेगा परिषद की टीम है, और हमने स्टेट के सर्क्यूलर्स पे छोड़ा हुआ है। सो मेरा मेन पॉइंट शुरू से लेकर आखिर तक आप लोगों से चर्चा में यही रहेगा कि ये तीन कैटेगरीज को भी एक सेफ्टी नेट की तरह नरेगा एक्ट में पार्लियामेंट्री संशोधन के आधार पे बिल्ड इन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट प्लीज। ये स्टेट प्रोफाइल है, इसमें हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसमें हम सभी की इंडिकेटर्स में आगे हैं। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो मेरा मेन टॉपिक है, इस पे ये सिर्फ थोड़े से बुलेट पॉइंट्स हैं, इसमें हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं ये क्लियर नहीं होता है, वो आगे की कुछ स्लाइड्स में फोटोग्राफ के माध्यम से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। हम बहुत समय से, ये मेरे एक साल के टेन्योर का नहीं है, पिछले 15 से 17 साल से, जब से नरेगा अस्तित्व में आया है, स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की विमेन को इसमें लगातार इन्वॉल्व कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छा जो आउटकम हम लोगों को देखने को मिला है वो है कपिल धारा कूप। इट इज ऑलमोस्ट लाइक द फार्म पॉन्ड्स, इट्स बेसिकली अ वेल ऑन द फील्ड ऑफ द फार्मर, इंडिविजुअल कैटेगरी, हितग्राही मूलक कैटेगरी का ये कार्य है। हर किसान के खेत पे एक कपिल धारा कूप या कुआं दिया जाता है। उसके बहुत सारे प्रभाव होते हैं। जिस खेत पे कुआं होता है उसको कहीं ना कहीं उस परिवार का सोशल स्टेटस भी गांव में बड़ा होता है। यदि मेरे खेत पे कुआं है तो मैं अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करती हूँ, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोशल, पूरा जो हमारा एक बहुत शार्प कैटेगरी होता है गांव में, उसमें सोशली भी एक कह सकते हैं अपवर्ड मोबिलिटी का एक जरिया है किसी के खेत पे कुएं का होना। एग्रीकल्चर डेफिनेटली इससे मल्टीप्लाई होता है, 2 से 3 बार की खेती उसके आधार पे, कपिल धारा कूप के आधार पे की जा सकती है। कपिल धारा कूप के वजह से हमारा एग्रीकल्चर एक्सपेंशन भी बहुत हुआ है, इंक्लूजन हुआ है, महिलाओं का हुआ है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज का हुआ है। मगर अब समय है कि हम वाटर कंजर्वेशन पर भी फोकस करें, क्योंकि कपिल धारा कूपों के माध्यम से दोहन बहुत हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो एक्ट में प्रावधान है कि जो हमारे प्राइमरी हाउस हैं, प्रायोरिटी हाउस हैं, उनको दिया जाना काम नरेगा में सबसे सर्वप्रथम है। प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के में अगर हम देखें तो हम मार्जिनल किसानों को एक तो लास्ट कैटेगरी में लेते हैं, उस वो भी कोई बाधा नहीं है, पर हमारे टिपिकली नॉर्थ इंडियन या मध्य प्रदेश के सीन में भूमि के बंटवारे को घर में लड़ाई के तौर पे देखा जाता है। ऐसे में हमको कई दफा ये होता है कि एक, जिसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक टाइप का डिस्गाइज्ड मार्जिनल फार्मर की स्थिति है, पर वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है क्योंकि स्कीम के लिए तो उसे हम नहीं दे रहे हैं। साथ में जो बात बार बार हम लोग की चर्चाओं में आ रही है, एक तो हो गया कि भाइयों के बीच में बंटवारा, साथ में उसमें महिला का, घर की लड़कियों का भी शेयर है। तो जब हम बात करते हैं कि हम आपको कूप देंगे, फार्म पॉन्ड देंगे, आप एक कच्चे कागज पे लिख के ले आए कि ये
प्रॉपर्टी महिला की होगी। इस पे हमने सर्कुलर निकाला भी है पिछले साल, पर हम प्रगति नहीं कर पाए हैं। उससे जो लर्निंग हम लोग की हुई है कि हमारी प्रगति के कारण क्या है, प्रगति नहीं आने के कारण क्या है, वह ये है कि एक रिलक्टेंस है बहुत ज्यादा महिला के नाम पे किसी एसेट को लिखने के लिए। और गांव में हमारी जो एक मतलब ग्राम रोजगार सहायक की भी जो टीम है, वह इसको रेवेन्यू के टर्मिनोलॉजीज में इस्तेमाल करते हैं। वी नीड टू डिस्कनेक्ट रेवेन्यू or property division from asset creation with reference to NREGA if we have to go forward on this one। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं अगर अभी ये बोलूंगी कि आप जमीन का बंटवारा करो ताकि वो मार्जिनलाइज किसान हो, और तो इमीडिएटली एक इश्यू आएगा कि वर्तमान लॉ के अनुसार उसमें महिला का या घर की जो ब्याह हो चुकी पुत्रियां हैं उनका भी हिस्सा आ जाएगा। सो पीपल विल नॉट डू इट। इंस्टेड ऑफ दैट आई विल हैव टू ड्राइव कि आपने एक कच्चे कागज पे लिख के दिया कि ये कुआं यदि बनेगा तो इस कुएं का देख रेख, इसमें मजदूरी, इससे यदि आप उसमें सिंघाड़े की खेती करते हैं या आप मछली पालन करते हैं या कमल की खेती करते हैं तो वह भी इससे महिला की आय का अतिरिक्त साधन होगा। ये यदि एक कच्चे कागज पे भी हमको लिख दिया जाए तो शायद हम इस एस्पेक्ट पे कुछ प्रोग्रेस कर पाए, फॉर मल्टीपल रीजंस। बिकॉज हम, जैसा मैंने कहा कि एक डिस्गाइज्ड मार्जिनल फार्मर है जिसकी जमीन को हम ट्रीट नहीं कर पा रहे, जो कि बड़ा बड़ा भूमिधारी है पर उस पर होल्डर्स या शेयर होल्डर्स बहुत सारे हैं। अब उसको हम फार्म पॉन्ड्स देना चाह रहे हैं क्योंकि वही आइडियल व्यक्ति है जिसके पास पर्याप्त जमीन है, वो आइडियल व्यक्ति है कैच द रेन अभियान का, फार्म पॉन्ड्स का, वह आइडियल व्यक्ति है वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स का, वह आइडियल व्यक्ति है ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग का, वह आइडियल व्यक्ति है जो कि शायद मछली पालन भी कर सके। जो सबसे छोटा किसान है जिसके पास पहले से भूमि कम है, हम यदि उसको बोलते हैं कि अब हम आपको कपिल धारा कूप या कुआं नहीं देंगे, आप फार्म पॉन्ड लीजिए, तो उसकी छोटी जमीन को हम पहले ही और कम कर देते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा अपना डायरेक्शन अब ऐसा शिफ्ट कर रहे हैं कि छोटे किसानों को एक कम्युनिटी कपिल धारा कूप दिया जाए जिससे उनकी एक कम्युनिटी तौर पे सिंचाई हो सके। और बड़े किसान में हमको एक डिस्गाइज्ड फार्मिंग कैटेगरी आइडेंटिफाई करके ऊपर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर एंड रेन वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स को फोकस करना होगा ताकि कूप का एक्सप्लॉइटेशन और पानी का कंजर्वेशन हम मैच कर सकें। और ये सब तब होगा जिसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट प्लानिंग में हो। कॉमन कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स की प्लानिंग में महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं होगा, वह भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्स लॉपसाइडेड बनेंगे। जो हमारे गांव का डोमिनेंट वर्ग है उसके पास वो स्ट्रक्चर ज्यादा बन जाएंगे, बजाय कि जो सबसे ज्यादा आवश्यकता रखने वाला समूह या ऐसा कोई सोशल ग्रुप होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वन बैक प्लीज, वन बैक। कॉन्वर्जेंस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, उसका केवल इतना ही तात्पर्य है कि चाहे ये सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो, टाँके हो, हमारी रोड्स हो, जो भी हम बना रहे हैं, इनकी प्लानिंग हम अभी टॉप डाउन कर रहे हैं, ये हमको एक्सेप्ट करना होगा। ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है, नीचे से प्लानिंग होके आनी चाहिए। हम चाहे जीपीडीपी हो, चाहे हमारा शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट हो, हम उसको नीचे से बना रहे हैं। हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेटरी एक्सरसाइज बहुत अच्छा हुआ भी है, पर फिर भी जिस तरह का एक्ट का फोरसाइट है, एक्ट हमारा जो नरेगा एक्ट चाहता है कि हम कम्युनिटी के हिसाब से करें, वो शायद अभी भी हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे सीजन्स होते हैं, हमने पिछले साल गौशालाएं बनाई, बहुत अच्छी बनी, अच्छी चल रही हैं। इस साल हम कैच द रेन पे फोकस कर रहे हैं, तो वो मैं ड्राइव डाउन कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं इस पूरे टॉप डाउन जो हम ड्राइव करते हैं उसका सबसे बड़ा खामियाजा महिलाएं और हमारा स्कीम भी भुगतता है। स्कीम में एक जो हम लोग को बार बार बात सामने आती है कि लेबर पार्टिसिपेशन बढ़ाने के समय कम से कम 15% लेबर ऐसा है जो ये कहता है कि वो इसलिए काम पे नहीं आया कि एसेट उनकी चॉइस का नहीं था। हमने जो काम उनको करने के लिए कहा वह उनकी चॉइस का नहीं था। हम सीसी रोड बना रहे हैं, हम पंचायत भवन भी बना रहे हैं, आंगनवाड़ी भवन भी बना रहे हैं। पंचायत भवन तो एक ही होता है, परंतु आंगनवाड़ियां अमूमन 2 से 3 होती हैं मोहल्ले में और गांव में, अलग अलग ग्रामों में।
कौन सी आंगनवाड़ी पहले बननी है, कहाँ पे लेबर खाली बैठा है, कहाँ पे लेबर एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, ये निर्णय कैसे होगा? ये निर्णय वर्तमान में हम लोग कागज पे बैठ के कर देते हैं कि ये आंगनवाड़ी आप पहले बना ले, हेडक्वार्टर की पहले बना ले, उसके जो सैटेलाइट ग्राम है वो बाद में बना ले। जबकि मोस्ट लाइकली होगा ये कि जो हेडक्वार्टर ग्राम होता है ग्राम पंचायत का, उसमें पर्याप्त सक्षम लोग होते हैं, उनके पास पर्याप्त भूमि होती है और वो एग्रीकल्चर सीजन में व्यस्त हो जाते हैं। जबकि जो बिखरे हुए दूरस्थ उसके ग्राम है, एक ग्राम पंचायत में एक गांव होता है हेडक्वार्टर का और आसपास बहुत सारे छोटे छोटे उसके गांव होते हैं, वो छूट जाते हैं। हम दौरे पे जाते हैं तो हम हेडक्वार्टर ग्राम पंचायत पे जाते हैं, ग्राम पंचायत का इंस्पेक्शन कर लेते हैं, परंतु जो उसके सैटेलाइट गाँव है वो छूट जाते हैं। सैटेलाइट गाँव में अभी भी मुझे कहीं कहीं, सब जगह नहीं, जो हमारे बहुत पिछड़े इलाके हैं, कार्ड्स की बिल्कुल फंडामेंटल है, 15-17 साल बाद प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जॉब कार्ड की समस्या है, जॉब कार्ड में 7 से 8 लोगों का परिवार दिया हुआ है, 100 दिवस बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, नवीन जॉब कार्ड नहीं बनाया है। वहां पे ठेकेदारी प्रथा हो सकता है अभी भी बहुत ज्यादा हो, क्योंकि हमारा फोकस पूरे समय हेडक्वार्टर ग्राम पंचायत पे होता है। प्लानिंग भी हम उसी तरह से करते हैं कि हेडक्वार्टर की सारी फैसिलिटीज पूरी कर दो, फिर सैटेलाइट ग्राम्स की करेंगे। जबकि जो हमारे अड़ोस पड़ोस के छोटे गांव हैं, उनमें इन सारे स्ट्रक्चर्स की, चाहे वो सीसी रोड्स हो, ज्यादा आवश्यकता है। जैसे ही हम महिलाओं से डिमांड लेना शुरू करते हैं कि आप बताइए आपको क्या लगता है कहाँ पे हम पहले काम शुरू करवाएं, लेबर कहाँ पहले लगेगी या लेबर कहाँ उपलब्ध है, तो इमीडिएटली आपके काम और लेबर की संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है। सो हमें पूरे प्लानिंग प्रोसेस को विमेन ओरिएंटेड करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट प्लीज। दीज आर सम फोटोग्राफ्स। इसके बाद मेरा पीपीटी बहुत फास्ट ही चलेगा। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं हमने कोविड में जो भी जिस तरह से मैनेज किया और काम पे लगाए रखा, सोशल डिस्टेंसिंग और नॉर्म्स का पालन किया। यहाँ पे एक पुरुष मेट या जीआरएस आपको नजर आ रहा है। हमने मध्य प्रदेश में अभी 50% मेट्स महिलाएं बनाने का टारगेट लिया है, पर आज की बातें सुन के मुझे ऐसा लगा, खासतौर पे जो मैंने कर्नाटका का प्रेजेंटेशन देखा, कि उनके सारे जीआरएस महिलाएं हैं। तो शायद हमारे यहाँ क्योंकि जीआरएस पहले से है, हम ऑलरेडी उस हमारे पास 20,000 के आसपास जीआरएस है। फोकस शायद अब 100% मेट्स को महिला मेट्स होने की आवश्यकता है, क्योंकि प्लानिंग में जब तक हम महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे नहीं, उनको हम सुपरवाइजरी या लीडरशिप रोल्स में लाएंगे नहीं, तो महिलाओं का लेबर पार्टिसिपेशन भी हम नहीं बढ़ा पाएंगे। और जो ट्रांसपेरेंसी हम एसेट क्रिएशन और एसेट प्रायोरिटी में चाह रहे हैं, यानी एसेट प्रायोरिटाइजेशन से मेरा तात्पर्य, मैं हिंदी में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी हूँ कि कौन सा एसेट पहले बनना है, महिलाओं को एक सेफ एनवायरनमेंट कार्य के लिए मिलना है कि नहीं मिलना है, ये एक महिला मेट के आधार पे होगा। मेट बहुत टेक्निकल काम है, ये एक शुद्ध जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर के छोटे सुपरवाइजर होते हैं प्राइवेट एरियाज में, मतलब जो प्राइवेट फंक्शनिंग की हम बात करें, उसका काम है। मेट कोई भी सोशल मोबिलाइजर या लीडरशिप है, किसी भी सुपरवाइजरी में लीडरशिप इन्वॉल्व होती है, परंतु ये वैसा काम नहीं है कि दीदी लोग एक दूसरे के घर गई स्व सहायता समूह के और दीदी लोगों ने समझाइश की और समझा के लेकर आए। ये काम है चूना मिट्टी रेत के ढेर की गिनती करने का, उस चूना मिट्टी रेत के ढेर का ये समझने का कि कितना गड्ढा खोदा गया, उसका माप लेने का, टेप से उसको नाप के उसको मस्टर पे चढ़ाना और उसको ऑनलाइन सिस्टम पे मस्टर पे चढ़ाना। तो ये बहुत ही सुपरवाइजर का जो काम होता है वह काम है। और सुपरवाइजर के काम में महिलाएं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आज भी आपको रेजा के काम में दिखती हैं और मेसन पुरुष होता है, और रेजा सिर्फ मार्ड होती है और उसकी वेजेस कम होती हैं। हमारे यहाँ रेजा उसको बोलते हैं जो महिलाएं तसलों में जो कंक्रीट मिक्स होता है उसको उठा के लेके जाती हैं और कंस्ट्रक्शन के पॉइंट पे, जो पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, वहां डिपॉजिट करती हैं। पुरुष काम करता है मेसन का। ऐसे में आप ये मान के चलें कि हमारे यहाँ अभी भी जो कच्चा मिट्टी का काम है, जो खुदाई का काम है, सभी जगह महिलाएं कर रही हैं। पर जहां टाइल फिक्सिंग का, प्लम्बिंग का, सोक पिट के हनीकॉम स्ट्रक्चर की बात आती है, वहां राजमिस्त्री या पुरुष मिस्त्री ऑटोमेटिकली सामने आते हैं। ऐसे में महिलाओं को वहां मेट बनाना, उनको उन पुरुषों के ऊपर सुपरवाइजर बनाना एक बहुत ही कठिन काम होगा। मैं अपने मध्य प्रदेश के परिवेश में इसको बहुत कठिन मान रही हूँ, परंतु उतना कठिन नहीं है। वी हैव अ गुड टीम ऑफ पीपल। पहला काम है अपॉइंटमेंट,
महिला मेड्स का, फिर उनकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, क्योंकि ये टेक्निकली साउंड होंगी। हमारे यहाँ इतना पढ़ा लिखा वर्ग है गाँव में कि हम टेक्निकली साउंड लोगों को ले सकते हैं। हमारे पास स्व सहायता समूह का NRLM का बहुत एक्टिव मूवमेंट है, जहां से हम सीधे सीधे महिला जो उनकी लीडर्स हैं उनको उठा के मेट्स में ला सकते हैं, और भी मेट्स का रिक्रूटमेंट ऐसे ही परिवारों से, जहां स्व सहायता समूह की दीदी लोग इस समूह में पिछले 10-15 साल से जुड़ी हैं। उन परिवारों में आप देखेंगे कि उनके बच्चे बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं और उनकी लड़कियों में भी एक एम्पावरमेंट या सक्षमता है, ऐसे परिवारों में जहां स्व सहायता समूह में महिलाएं पहले से इन्वॉल्व हैं। इन महिलाओं को हमको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आइडेंटिफिकेशन ऐसा ना हो जाए जैसा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ कई जगहों पे हुआ है कि सबसे वर्चस्व रखने वाले परिवार, जैसे सरपंच हो या ग्राम सचिव हो, उसके परिवार की महिला ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बन जाती है। तो हमारा पूरा कंसेप्ट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। हमको महिला मेड के चयन के समय में उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के साथ साथ उसका सामाजिक परिवेश भी इंक्लूड करना होगा, और वह सामाजिक परिवेश के लिए हमको कुछ ऐसे पॉजिटिव गाइडलाइंस देने होंगे कि हम एक पर्टिकुलर वर्ग को उसमें से एलिमिनेट कर सके। सुनने में ये बहुत शायद पार्शियल या प्रेजुडिस लगेगा, परंतु यदि मेरी महिला मेट सारी की सारी वर्चस्व रखने वाले परिवार से आ गई, तो मेरा जो पर्पस है विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी के कंसेप्ट्स को गांव के अंतिम धरातल तक पहुंचाने का, वह फिर कभी इसमें पूरा नहीं होगा। सो महिला मेट का चयन हमारे लिए एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। इसमें अब मैं जो सिविल सोसाइटी पार्टनर्स हैं, जैसे प्रधान है, TFIR है, इनकी मदद ले रही हूँ ताकि हम वास्तविक लोगों को मेट के काम पे आके ला सके। और जैसा हम लोग का पिछली बार डिस्कशन हुआ था कि महिला मेट्स के वेजेस में भी इशू आता है, क्योंकि ये मटेरियल से जारी होता है। मटेरियल से जो लोग इस स्कीम को ऑपरेट कर रहे हैं, जो एडमिन साइड में है, इसको समझ सकेंगे। हम स्किल्ड वेजेस को मटेरियल खाते से देते हैं, जबकि हम बाकी लोगों की लेबर की जो वेजेस है, बाकी लेबर की, वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है भारत सरकार के खाते से PMFMS के माध्यम से लेबर के। तो वो बहुत स्मूथ है, वहां पे शिकायत की गुंजाइश नहीं है। अगर जॉब कार्ड मेरे हाथ में है, तो यदि मैंने अपना जॉब कार्ड किसी और के हाथ में दे रखा है, तभी उसमें गड़बड़ी होती है, अन्यथा वो ट्रांसपेरेंट है। परंतु मेट की वेजेस मटेरियल से निकलती हैं। इसमें हम पूरे के पूरे अपने ब्लॉक की टीम पे डिपेंडेंट हैं। मैं भी कहीं ना कहीं अभी तक मटेरियल का पूरा एक साथ भुगतान निकालते आई हूँ, जबकि हमको मेट्स का अलग से निकालना चाहिए। स्किल्ड वेजेस है, विशेष तौर पे महिला मेट्स का अलग से निकालना चाहिए। मटेरियल से निकालने से प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई MIS नरेगा सॉफ्ट बेस सिस्टम नहीं है इसकी ट्रांसपेरेंसी और वैलिडिटी चेक करने का। तो इसमें एक गैप फिलिंग हमको करने की आवश्यकता है कि वो कौन सा हम एक छोटा सा अपना ऐप बनाएं, जो ऐप ये डिसाइड करे कि जो मटेरियल का पैसा मैंने महिला मेड के भुगतान के लिए दिया है, वह वास्तव में उनके अकाउंट में जाए, और उन्हीं के अकाउंट में जाए, ना कि उनके पति या उनके घर के किसी अन्य व्यक्ति के। ये अकाउंट जो हमारे जॉब कार्ड के हैं, ये एक और समस्या है महिलाओं के एम्पावरमेंट में। जॉब कार्ड में हमारा परिवार शामिल होता है। उस परिवार में नॉर्मली सबसे पहले उस परिवार के मुखिया या पुरुष का नाम लिख दिया जाता है, और जब भुगतान होता है तो बार बार एक GRS इतने खातों में भुगतान करने की बजाय किताब के ऊपर, क्योंकि उसको सिंपल पड़ता है, किताब के पन्ने के ऊपर उसने अपना एक जॉब कार्ड पे एक खाता लिख रखा होता है, जो उसके पुरुष का खाता होता है, वही उसकी ऑनलाइन सिस्टम में वो आसानी से फीड करता है। जब कहीं एरर आता है तो वो किताब के पहले पन्ने से ही चेक कर लेता है, ना कि अंदर खोल के। सो जब ये वाली लिंकिंग हमारी होती है, तो हमारा हर बार खाता अमूमन उस घर के पुरुष का खाता होता है, जबकि हो सकता है वहां महिला ने भी काम किया हो, क्योंकि हमें ये फ्रीडम है कि किसी के भी वेजेस हम उस परिवार के किसी भी अकाउंट में दे सकते हैं। जब हम इससे अलग करने की कोशिश करते हैं तो हम ही समस्या झेलते हैं। ये भी एक मेरी लर्निंग है। जब मैं ये कहती हूँ कि पुरुष की वेजेस पुरुष के खाते में और महिला की महिला के खाते में जाएं, तो हमारे पास शिकायतें बढ़ जाती हैं। जो हमारा टोल फ्री नंबर है CM हेल्पलाइन का, कि मुझे आधी वेजेस मिली, फिर हमें उनको दिखाना होता है खाते के डिटेल्स प्रिंट आउट करा के कि देखिए आपके ही परिवार के अन्य व्यक्ति को और भी बचे हुए वेजेस गए, तो आपको पूरे वेजेस मिले। तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमको लीगली एट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल हमारे एक्ट में कुछ प्रावधान करने की आवश्यकता है कि फॉर पर्पसेस ऑफ नरेगा, एटलीस्ट फॉर पर्पसेस ऑफ नरेगा, it will have to be understood that the मुखिया of the family has to be the woman of the family। इसलिए नहीं कि हम मतलब बिल्कुल समाज का एक औंधा स्ट्रक्चर क्रिएट करने का, कुछ बहुत ही अल्ट्रा फेमिनिस्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नरेगा में
ज्यादा ही ज्यादा 40% से तो ऊपर महिलाएं ही काम कर रही हैं। हम चाह रहे हैं कि ये परसेंटेज 50 के ऊपर, 60 के ऊपर जाए। तो ऐसे में क्यों नहीं नरेगा का प्रमुख खाता, फर्स्ट खाता पुरुष का ना हो के महिला का हो, या फिर भारत सरकार से ये चेक हो कि जिसने मजदूरी की है उसी के अकाउंट में जाए, किसी अन्य के ना जाए। हमारा जो जॉब कार्ड का और फैमिली हाउस होल्ड का सिस्टम है, उसमें हम ये चीज टेक्निकली नहीं कर पा रहे हैं, या संभवतः हमारे सर्वर्स इतनी लोड नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हम ये चीज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पे दिस इज वन गैप फिलिंग वेयर वी नीड टू think how to work forward and look forward to what can be done to make it more women inclusive. ये हम लोग ने बैंक सखी का सिस्टम है, बैंक सखीज NRLM के माध्यम से हमारे यहाँ ऑपरेट करती हैं। बैंक कोरेस्पॉन्डेंट से पैसे निकालने और इसमें कई सारी इश्यूज जो आते हैं, उसमें बैंक सखियों का रोल काफी पॉजिटिव रहा है वेज डिसबर्समेंट में। नेक्स्ट में आ जाए प्लीज। नो आई थिंक या प्लीज नेक्स्ट, इसको भी हम आगे बढ़ा दें, सब चीजें ज्यादातर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। हमारे यहाँ एक इनिशिएटिव कुछ जो हुए हैं भूमि सुधार के NRM कार्यों के, उसमें एक है CNG का, कम्युनिटी न्यूट्रिशन गार्डन का। ये 2 हेक्टेयर से बड़े सब्जी उत्पादन के गार्डन हैं। कम से कम 2 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर सब्जी उत्पादन का काम किया गया है। इसको रिसेंटली अब हम क्लब करने जा रहे हैं 100% अपने प्लांटेशन के साथ। प्लांटेशन के साथ इसलिए क्योंकि आप आम का प्लांटेशन यदि करते हैं, या आप अमरूद तो फिर भी 6 माह से 4 साल में फल दे देता है, आम का प्लांटेशन समय लेता है, नीम का प्लांटेशन समय लेता है। इंटरक्रॉपिंग में यदि हम इस शासकीय भूमि पे मार्जिनलाइज्ड महिलाएं, जो कि भूमिहीन महिलाएं हैं, और सर्वप्रथम SC ST वर्ग की महिलाएं हैं, उनको क्यारियों का बंटवारा करके बड़े पेड़ों के दरख्तों के बीच में सब्जियों के उत्पादन के लिए हम इनको स्थान देते हैं। इसमें मैंने कई सारे इनिशिएटिव्स और सब स्कीम्स हमारी एक साथ लिंक कर दी हैं, पर अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो मैं बैक एंड फोर्थ करके थोड़ा सा, ओके फाइन, आई विल गो विथ माय PPT ओनली। हमने महिलाओं को सब्जी उत्पादन में इन्वॉल्व किया। इसके 2-3 आयाम हैं। एक है न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, एक है न्यूट्रिशनल इंक्लूजन ऑल्सो, कि हम केवल गेहूं, धान, चावल ये ना करें, हम सब्जियों का भी उत्पादन करें और गांव में सब्जियों की उपलब्धता बढ़ाएं। अनदर इज डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इंटेंसिवली मोनोक्रॉपिंग बढ़ रही है, जिसके लिए भी नरेगा कहीं ना कहीं ऐसे जिम्मेदार है कि हमने मेड़बंधान का काम बहुत अच्छे से किया। मेड़बंधान से हमारे सबसे छोटे किसान जो पहले पैडी नहीं ले पाते थे, उन्होंने पैडी लेना भी शुरू किया और उनकी प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ी। पर ये भी हमको देखना होगा, कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करना है कि जब हम मेड़बंधान, छोटे किसान मतलब बड़े को तो दे ही रहे हैं, वो तो पैडी कर ही रहा है, छोटे किसान को भी हमने मेड़बंधान दे दिया, वो पैडी कल्टीवेशन में आ गया। पैडी कल्टीवेशन हमारा जो छत्तीसगढ़ से लगे इलाके हैं वहां शुरू से था, वहां से फैलते फैलते अब रायसेन और भोपाल जिलों तक आ गया, जो कि कभी भी पैडी के इलाके नहीं थे। हमें एक हमारी स्कीम्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कलेक्टिव एनवायरमेंटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी देखना है कि हम एनवायरमेंटली दोहन करने वाली पद्धतियों को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि नहीं अब हम और मेड़बंधान नहीं करेंगे, तो मैं सबसे छोटे किसान को मार रही हूँ, जो कि हमारा नरेगा का टारगेट होना चाहिए। तो ऑल्टरनेटिव हम क्या दे रहे हैं उसको फिर हमको ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा कम्युनिटी न्यूट्रिशन गार्डन्स के तौर पे, सब्जियों के कल्टीवेशन के तौर पे, और इसमें हम जो फ्री ड्रिप इरिगेशन की डेमो प्रोजेक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन के बड़े बड़े टारगेट्स भारत सरकार से आते हैं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में, खासतौर पे हॉर्टिकल्चर मिशन में आते हैं, उनके साथ अभिसरण करके हम इनको ड्रिप इरिगेशन में कम्युनिटी कपिल धारा कूप के साथ जोड़ रहे हैं, फेंसिंग के साथ जोड़ रहे हैं, खेत तालाब के साथ जोड़े, और ये सब कुछ हम कर रहे हैं शासकीय भूमि पर 5 से 10 साल के टेम्पररी पट्टे पे। पट्टा उसका गलत शब्द है, एक MOU ग्राम पंचायत करेगी महिला समूह के साथ, और ये महिलाएं वो महिलाएं हैं जो कि अभी तक दूसरों के खेतों पे एग्रीकल्चर लेबर, कैजुअल एग्रीकल्चर लेबर का कार्य कर रही थी। नेक्स्ट प्लीज।
ये मैंने सिर्फ इंडिकेटिव 2 फोटोग्राफ्स डाल दी हैं ये बताने के लिए कि जो हमारा धान के उत्पादन में हम ओपन कैप्स में कवर एंड प्लिंथ कहलाता है, उसमें हम स्टोर करते हैं धान को या गेहूं को, इसमें भी हमारा प्रोक्योरमेंट का काम महिला समूह कर रहे हैं। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटियां प्रोक्योरमेंट करती हैं, महिला समूह कर रहे हैं, जिसमें इनको 10 से 12 लाख का बिजनेस ये आराम से कर लेते हैं, जो कि एक बिजनेस का बहुत बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में प्रोक्योरमेंट बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा प्रोक्योरमेंट हो ही रहा है। तो इस बिजनेस में हमने महिलाओं को इन्वॉल्व किया है। और ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये पूरी तरह बिना अभिसरण नरेगा से बना है। सो परमानेंट एसेट है, प्रोक्योरमेंट हो ही रहा है। महिला समूहों को हमने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है और उनका टाई अप करवाया है कि वे फूड डिपार्टमेंट के लिए प्रोक्योरमेंट भी करवा के दें। तो उनको हमने 3-4 डिपार्टमेंट्स के साथ अभिसरण कर और नरेगा से प्लेटफॉर्म देके कैप एंड, जिसको कैप प्लेटफॉर्म कहते हैं, कवर एंड प्लिंथ, वो उपलब्ध कराया है। नीचे एक माइनर नहर है जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट नॉर्मली इतनी छोटी नहरों पे फोकस भी नहीं करते हैं और करते नहीं हैं, जिससे भी सबसे छोटे किसान प्रभावित होते हैं, जिससे कि महिलाओं पे खेती का जो एग्रीकल्चर लेबर का लोड है वह बढ़ता है। वो हमने इससे बढ़ाने की कोशिश की है। ये एक्सटेंसिवली हमारे यहाँ ये दोनों काम बहुत एक्सटेंसिवली किए गए, कोशिश की जा रही है कि सैचुरेशन मोड में किए जाएं। नेक्स्ट प्लीज। ये गौशालाएं हैं जिसका चारागाह है और नीचे गाय के पानी की व्यवस्था हमने की है। केवल एक स्टैंड अलोन गौशाला बना देना, उसका चारा नहीं होना और उसके लिए पानी नहीं होना एक क्राइसिस को क्रिएट करता है। इन गौशालाओं को नॉट 100% बट 50% हमारी स्व सहायता समूह की महिलाएं चला रही हैं। इससे जो गोबर इकट्ठा होता है वो सारा का सारा हम कंपोस्ट में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं, तो गोबर का भी गौ काष्ठ यानी कि जो जलाए योग्य लकड़ी का सब्स्टिट्यूट होता है वह हम बना रहे हैं। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट कंपैरिजन है, बट कोरोना के समय में जब लकड़ियों की शॉर्टेज थी तो गौ काष्ठ वाकई हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है चिताओं के लिए यूज हुआ है। बट गौ काष्ठ बनाने की जो मशीन है वो मुश्किल से यदि लोकली बनाई जाए, जो लोकल प्रोड्यूसर आपको देता है, तो वो 30,000 से मैक्सिमम 70,000 में आती है, जो कि स्व सहायता के समूह की महिलाएं अपनी ही बचत से खरीद सकती हैं और उससे ज्यादा आय वो उसमें एक सीजन में कर लेती हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर अगेन 100% नरेगा से बनाया गया है, परमानेंट एसेट है। नेक्स्ट। प्लांटेशंस है, मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम लोग इसको कॉन्वर्जेंस करें। नेक्स्ट प्लीज। GIS based planning and why I'm bringing in GIS based planning for women, ये बहुत ही एकेडमिक स्लाइड है, इसको हम आगे कर देते हैं, इसका आप नेक्स्ट पे आ जाएं। ये एक बेसिकली ये बताने की कोशिश की है कि महिलाओं का और पानी का बहुत पुराना संबंध है। यदि उनको पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा या उनके पास प्रॉपर पानी उपलब्ध नहीं होगा तो वो वुमन इज द प्राइमरी सफरर। तो अभी भी हमारे यहाँ क्योंकि रेनफॉल पैटर्न कुछ एरियाज एरिड है, कुछ एरियाज सफिशिएंट है, ऐसे में विभिन्न प्रकार के जलकुंड, विभिन्न प्रकार के वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो हम घर के अंदर दे रहे हैं, उससे महिलाओं को साल भर तो पानी नहीं मिलेगा, परंतु यदि 3 महीने भी पानी मिल रहा है उस कुंड में, तो हम उसकी जो ड्रजरी है, उसकी जो एक सख्त मेहनत है, वो कम से कम हम 3 महीने से तो कम कर पा रहे हैं। वह उस पानी को अपने घर में, अपनी बाड़ी में, भले ही 3 महीने के लिए ही सही, कुछ फल सब्जी, कुछ धनिया मिर्ची उगाने के लिए तो उपयोग कर पाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका न्यूट्रिशन और उसकी मेहनत जो पानी लाने में हो रही थी वह बेहतर होती है। और यही पानी कुक्कुट पालन में या पोल्ट्री में भी बहुत काम आता है। मैंने GIS बेस्ड प्लानिंग की इसलिए बात की है। इसके नेक्स्ट स्लाइड्स पे आ जाए प्लीज। महिलाओं की नेक्स्ट या दिस इज अ फ्यू, मतलब मैंने सिर्फ डिपिक्शन के लिए दिए हैं कि हमारे GIS मैप्स कैसे दिखते हैं। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग है जो कि वाटरशेड के बाद का नेक्स्ट कंसेप्ट है। वाटरशेड प्लानिंग से आगे का कंसेप्ट है GIS बेस्ड प्लानिंग, क्योंकि इसमें मल्टी लेयर्ड मैप्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस प्रोजेक्ट में आई एम वेरी हैप्पी दैट मध्य प्रदेश इज लीडिंग। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितने भी हुए हैं इनके अबाउट 48,000 ग्राम पंचायतें हुई हैं, जिसमें से 20,000 ग्राम पंचायतें मध्य प्रदेश की ही हैं जिन्होंने मैप्स तैयार करके अपलोड कर लिए हैं। अब हम पूरी अपनी पानी की इन्वेंट्री इन्हीं मैप्स पे बना रहे हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये 8-10 लेयर के मैप हैं। इसमें आपको ये देखने में, अगर आप अगली स्लाइड पे जाएं, मेरे पास उतना समय नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में जाएं तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इस मैप को देखने से मुझे ये पता चल जाता है कि नरेगा के स्ट्रक्चर कहाँ बने हैं, पानी कहाँ है।
पेड़ कहाँ है, हैबिटेशन कहाँ है, और वो हैबिटेशन कौन से वर्ग, समुदाय, जाति का है। तो मुझे एक बहुत ट्रांसपेरेंट पिक्चर यहीं से बैठे बैठे देख के पता चल जाती है कि स्ट्रक्चर बनना कहाँ चाहिए था, बना कहाँ है, उसकी प्लानिंग में, प्रायोरिटी में, शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में वो कहाँ होना चाहिए, कौन सा वर्ग, कौन सा जाति समूह बार बार हमारी प्लानिंग से स्लिप आउट हो रहा है या छूट जा रहा है, और कौन से समूह को हम काफी ज्यादा कार्य दे रहे हैं। अब इसमें इन्वॉल्वमेंट है महिला मेट्स का और महिला स्व सहायता समूह का। मेरी जो ट्रेनिंग महिला मेट्स की होगी उसमें जीआईएस बेस्ड मैपिंग और प्लान एक अत्यंत महत्वपूर्ण उसका पूरक अंग होगा। हमारी महिला मेट्स दर दर भटक भटक के लोगों को गांव में इकट्ठा करने के लिए नहीं है, केवल वे एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हैं। वे ये भी देखेंगी जो प्लानिंग हुई है, जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वो क्या है क्या नहीं है। जब वे अपने महिला समूहों के साथ बैठेंगी तो वो इन मैप्स के प्रिंट आउट ले सकें तो उसके साथ बैठें, क्योंकि वे मेट्स होंगी, उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग होगी। हम उनको कोई टैबलेट या कोई स्मार्टफोन उपलब्ध करा पाते हैं या नहीं करा पाते हैं, कम से कम ग्राम पंचायत भवन के कंप्यूटर सिस्टम पे वो अपनी महिलाओं को ये मैप्स दिखा सकेंगी। इन मैप्स की जो ट्रूथिंग हम पार्टिसिपेटरी एक्सरसाइज में चाहते हैं कि क्या मैप वास्तव में पार्टिसिपेटरी है, इसकी प्रायोरिटी साइंटिफिकली हो सकता है कि पानी का स्ट्रक्चर कहीं और बनना चाहिए, पर कम्युनिटी की डिमांड है और महिलाओं की डिमांड है कि पानी का स्ट्रक्चर वहां नहीं यहाँ बने, तो आई विल गो विद द डिमांड ऑफ द कम्युनिटी कि वो स्ट्रक्चर पहले वहां बने जहां महिलाएं चाह रही हैं, उसके बाद वो साइंटिफिक रिज टू वैली में हम सिस्टम पे जाएं। नहीं तो हम महिलाओं का कॉन्फिडेंस खो देते हैं और उनकी जो लीडरशिप है हम उसको किल कर देते हैं कि इनकी कोई बात सुनता नहीं है। मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इन मैप्स को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। एनीवे विल कम नेक्स्ट। इसके बाद तो फोटोग्राफ्स ही हैं, मोस्टली व्हाट आई हैड टू से आई हैव सेड। एक पॉइंट और है, बार बार मैं महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट, नेक्स्ट पे आ जाए प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट में नेक्स्ट, these are lots of sub schemes which we are doing. I have explained with the example of CNG only. अब ये मीनाक्षी तालाब है जिनमें मछली पालन हो रहा है, उसमें हमारी महिलाएं शामिल हैं। मैंने एक्सप्लेन केवल एक सीएनजी के रूप में किया कि हमारी हर प्रत्येक सब स्कीम में महिलाओं को हम इन्वॉल्व करेंगे तो कैसे हम उसको लॉन्ग टर्म नरेगा का जो वर्जन 2 होना चाहिए, नरेगा पार्ट 2 होना चाहिए या जनरेशन 2 होना चाहिए नरेगा का, उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन और उनकी इनकम सिक्योरिटी, उनकी सोशल सिक्योरिटी या सोशल मोबिलिटी का इम्प्रूवमेंट भी शामिल होना आवश्यकता है उसकी। एग्रीकल्चर, ये इसका सीएनजी का ही प्रोजेक्ट है कि उन्होंने कितनी सब्जियां उगाई, ये बाजार में बेचने के लिए फ्री है। इन्होंने आंगनवाड़ियों में और कोविड सेंटर्स में भी इनको फ्री बांटा। नेक्स्ट प्लीज, these all photographs we can very quickly go through them. So सब्जियों का नर्सरी को राजेश्वरी ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है। हमारी इन हाउस नर्सरीज होती हैं, इनको भी महिलाओं ही संचालन करती हैं। नेक्स्ट, ये भी स्लाइड में आप देखेंगे विभिन्न प्रकार की इंटरक्रॉपिंग की जिसके मैंने बात की है। हमारे एग्जिस्टिंग प्लांटेशंस में सबके बीच में नर्सरी और सब्जी का प्लांटेशन इस प्रकार की क्यारियों में हम करवा रहे हैं। और क्यारियां कितनी संख्या है, हम उस क्यारी की संख्या से महिलाओं को बांट देते हैं कि इस प्लांटेशन की 2 क्यारी कमलाबाई की है, इस प्लांटेशन की 4 क्यारी सावित्री बाई की है। इस तरह से उनको देते हैं तो वो उसको पर्सनली पूरा टेंडिंग करती हैं और उससे जो भी उत्पाद होता है उसको कंज्यूम भी कर सकती हैं, बेच भी सकती हैं। डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम की जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्लीज, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम की जब हम बात करते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इंटरवेंशन फर्स्ट. On the secondary level, it is an agricultural intervention. On the primary level, intervention of doubling of farmers' income is providing the nudge for wage negotiation and also money power और liquidity. Wage negotiation से मेरा मतलब है कि हम किसान को जब wages उपलब्ध कराएंगे जिसका माध्यम है नरेगा, तब हम किसान को उसका एक बार्गेनिंग पावर देंगे कि वो बहुत एक्सप्लॉइटेटिव रेट्स में माइग्रेशन पे या कहीं और काम
ना करे, जब उसके पास एक आदमी, मैं फिर भी ये मान रही हूँ कि हमारे यहाँ जो स्थिति है, एक व्यक्ति परिवार का माइग्रेट करेगा, एक पीछे रह के खेत पे काम करेगा। जो पीछे रह के खेत पे काम करेगा उसको नरेगा से वाइबल ऑप्शंस हमें देने हैं। जैसा मैंने कहा कि बड़े किसानों की योजनाएं नहीं, छोटे किसानों की योजनाएं, जिसमें हम नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को उनके लिए वाइबल बना सके, उसको लेना है। हमारा कम्युनिटी न्यूट्रिशन गार्डन पूरी तरह नेचुरल फार्मिंग के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। इसमें हम पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स उपयोग नहीं करने दे रहे हैं। उसके बाद भी महिलाएं खुश हैं, आय अच्छी है, परंतु यह शासकीय भूमि पर है। यदि इसको निजी भूमि पर किया जाएगा तो इसकी फाइनेंशियल मॉडल और वायबिलिटी में कुछ समस्याएं हमको आएंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत वायबल मॉडल वर्तमान में अभी भी नहीं बन पाया है। नेक्स्ट प्लीज। ये अभी प्लांटेशन एंड जय किसान योजना के हैं, हम इससे मियावाकी पे डिस्कशन हो चुका है। आप आगे आ जाएं प्लीज, आगे हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ज्यादातर फोटोग्राफ्स हैं इसमें। एक जी नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। बस ये आप लोगों के देखने के लिए। मल्चिंग पे चले जाएंगे पीछे। हम मल्चिंग बेस्ड भी कर रहे हैं। ये प्लांटेशन है हमारा, और इसमें हमने मल्चिंग की प्रक्रिया यूज की है, जिसका कि भुगतान मटेरियल पोर्शन जो हमारा उसका होता है डीपीआर का, टेक्निकल एस्टिमेट के मटेरियल से हमने मल्चिंग का भुगतान किया है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव प्रैक्टिस नहीं है। नेक्स्ट। ये सभी के यहाँ कॉमन प्रैक्टिसेस हैं। गोट शेड्स के बारे में मैं एक बताना चाहूंगी कि गोट एंड पोल्ट्री में भी मध्य प्रदेश हैज डन वेरी वेल इन द लास्ट 25 years बिफोर नरेगा आल्सो। एंड इसमें हमारी लर्निंग, हमारे सीनियर्स ने जो काम किया है, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे प्रधान ने काम किया है, और जो कोऑपरेटिव्स बनाई हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू नेक्स्ट इज टू टेक दिस कोऑपरेटिव मूवमेंट of livelihood generation through poultry and others also like fishery and goatry, but primarily through poultry and egg on a very large scale. इसको हम मध्य प्रदेश में जितना एग्जॉस्टिवली कर सकें, और इसका मार्केट लिंकेज, उसका जो कोऑपरेटिव्स और फेडरेशंस के माध्यम से इसका कर सकें, वो जितना बढ़ा सके, आई थिंक वो कम है। अभी इसको हमको बहुत सैचुरेट करने की आवश्यकता है इस कार्य को। बट यस, मध्य प्रदेश में इसका एग्जाम्पल बहुत लीडिंग रहा है, और इसमें रोल नरेगा तो अभी उसमें नया है, हमारे जो सीनियर्स रहे हैं और प्रधान की टीम का बहुत ज्यादा रहा है। प्रधान की टीम ने हमारे यहाँ के सबसे सक्सेसफुल जो पोल्ट्री कोऑपरेटिव कंपनीज हैं उनको फॉर्म किया, और उसके बाद दे हैव बैक्ड आउट इन द सेंस दे हैव मूव्ड आउट ऑफ इट and they have made these companies independent. Now the task is to use NREGA for infrastructure and take this infrastructure into a cooperative format for poultry. एंड कोऑपरेटिव्स को, या जो हमारे एफपीओज हैं, अब कोऑपरेटिव में ना जाके इंटरेस्ट ज्यादा जो है एफपीओ पे है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम 100% नरेगा से दें। महिलाओं का रोल इसमें अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं को जब भी हमको काम देना होता है, एक बेसिक प्रिंसिपल है, मेरे जैसी महिलाएं इसके लिए बहुत बुरा एग्जाम्पल है। हम घर से बाहर जाते हैं, दौरे पे लंबा लंबा जाते हैं, घर में हमारा एक टीम होती है जो हमारे परिवार को संभाल लेती है, खाना पीना, बच्चे देखना, हर एक के लिए होता है। आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन टू नो व्हाट अ वुमन इन द विलेजेस नीड। महिलाओं को जो गाँव में चाहिए है, वो उनके घर में आय का साधन चाहिए है। जब तक हम महिलाओं को उनके घर में, उनके आंगन में, उनके बैकयार्ड में सक्षम नहीं बनाएंगे वित्तीय तौर पे, तो हम उनको एक बहुत आर्टिफिशियल सिस्टम में फोर्स करेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं एक ठेकेदारी और मजदूरी का रिश्ता होगा, कि वो जाके किसी और एसेट पे काम करें। हम बात पोल्ट्री की कर रहे हैं, पर इसमें मेरा कम्युनिटी एसेट को लेकर भी एक पॉइंट है जो मैं रखना चाहूंगी। प्राइमरी पॉइंट है कि हम चाहे गौशालाएं हो, हमारी गौशालाएं बहुत सक्सेसफुल हैं, चारागाह हो, पोल्ट्री हो, इनमें सभी में महिलाओं को ही इन्वॉल्व किया है, और उसमें एक अच्छा आय का साधन महिलाओं को हमने उपलब्ध कराया है। अब मेरे लिए नेक्स्ट चैलेंज है कि बैकयार्ड में जो हम महिलाओं को काम देने की बात करें, कि महिलाओं को उनके घर में ही काम मिले, उसके साथ में जो महिला मेड का कंसेप्ट है वो मैं लाना चाह रही हूँ
कॉमन्स जो हमारे होते हैं, द कंसेप्ट ऑफ कॉमन्स एंड कॉमन ग्रीन्स का जो कंसेप्ट है, बहुत पुराना हैकनीड कंसेप्ट है। हम कई सालों से कॉमन्स का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि जो सामुदायिक भूमियां हैं और सामुदायिक भूमियों का विकास है वह बहुत आवश्यक है यदि हम गांव को सक्षम बनाना चाहते हैं। परंतु सामुदायिक भूमि का विकास यदि आपने, आई विल बी वेरी एक्सट्रीमिस्ट इन सेइंग दिस, अगर आपने पुरुषों पे छोड़ दिया और गांव के पुरुषों पे छोड़ दिया तो उस पर केवल एनक्रोचमेंट होगा और सक्षम व्यक्ति का खेत बनेगा या सक्षम व्यक्ति की सिंचाई करने के लिए वहां तालाब बन जाएगा। जिस तालाब का पानी भले कम्युनिटी के लैंड पे हो जाएगा सक्षम व्यक्ति के खेतों पे ही। और आप यहाँ पे अगर महिलाओं को इन्वॉल्व करेंगे तो वो एक कम्युनिटी एसेट बनेगा, जिसमें कि महिलाओं को, हमने इस पे सर्कुलर भी जारी किया है, हम ट्रेनिंग भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं कलेक्टिवली सिंगाड़े की खेती करें, चाहे कमल की खेती करें, चाहे मछली पालन करें, परंतु यह वाटर एसेट्स, कम्युनिटी एसेट्स, कॉमन ग्रीन्स हमारे महिलाओं के कंट्रोल में होना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए हम इसको एक MOU के माध्यम से महिला स्व सहायता समूहों से बांध के रखेंगे। यह भूमियां, अब उसमें एक्चुअल प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के चैलेंजेस भी अपनी जगह आएंगे, परंतु एटलीस्ट लीगली जो हम अपने स्तर से कर सकते हैं कि ग्राम पंचायत का MOU स्व सहायता समूह से ही होगा। जैसा कि इन जो फोटोग्राफ्स आपके सामने दिख रही हैं, ये जो पानी का स्ट्रक्चर बना है, जो गौशाला बनी है, ये स्व सहायता समूहों के द्वारा चलाई जा रही हैं और इनकी 5 साल के लिए टेम्पररी ओनरशिप महिला स्व सहायता समूह के ही पास है। नेक्स्ट प्लीज। नाडेप खाए हैं, ये तो हम बना ही रहे हैं, बट अगेन ये कम्युनिटी लेवल पे बनने हैं, इंटीग्रेशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ महिलाओं के लाभ के लिए बनने हैं। नेक्स्ट, these are just photographs, I've already explained what we are doing, please next। ये एक मैं आपको इंटरवीन करूंगी, इसका महिलाओं से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, परंतु ये या दिस वन, ये हमारे स्कूल फर्नीचर्स हैं जो हमने लकड़ी और चूने से बनाए हैं। स्कूल फर्नीचर देना आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए फाइनेंशियली गाँव में, और जमीन पे बैठ के, टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ने का और टाट पट्टी पे बैठ के मध्याह्न भोजन का खाना खिलाए जाने का एक मानसिक सामाजिक भी परिवेश है जिसको कि समझना हमें आवश्यक है। जमीन पे बैठ के खाने में कोई बुराई नहीं है, ये बहुत मतलब उसके सेंसरी इश्यूज हैं। जमीन हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चार्ज करता है, जमीन पे बैठ के क्रॉस लेगेड खाने से खाना बेहतर हजम होता है, वो चीजें अपनी जगह हैं। पर यदि ऐसा ही है तो आप और हम क्यों नहीं अपने घरों में जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं, या आप और हम अपने बच्चों को क्यों नहीं टाट पट्टी पे नीचे बैठा के पढ़ाते हैं। सो देयर इज अ क्लियर कट सोशल डिस्टिंक्शन टू दीज थिंग्स ऑल्सो, एंड स्कूल फर्नीचर हैज बीन अ मेजर चैलेंज। सो वी आर प्रोवाइडिंग, एंड दिस फर्नीचर दैट यू सी, ये एग्जिस्टिंग क्लासरूम है सर्व शिक्षा अभियान का, हमने इसमें कुछ एड ऑन नहीं किया सिवाय फर्नीचर के। ये फर्नीचर मुझे, जो एक बेंच टेबल की कॉस्ट है, ये 2500 से 4000 रुपए आती है एक बेंच और टेबल की। 4000 में मैं मानती हूँ कि मेरा पैसा लीकेज हुआ है, इसमें चोरी हुआ है। 2,500 से 3,000 में एक टेबल बेंच बहुत अच्छे से बन जाता है। पूरे कमरे का फर्नीचर आराम से 20,000 में, मैक्सिमम 30,000 में बन जाता है। तो यदि इसको हम फेजेस में लें कि हर स्कूल का एक कमरा टेबल बेंच वाला बनाया जाना है, तो उस हम धीरे धीरे शायद 5 साल में अपने सारे ग्रामीण परिवेश के शासकीय स्कूलों में फर्नीचर भी उपलब्ध करा पाएंगे। दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू women, but it is a social intervention and not so much of a infrastructure intervention। जय किसान योजना है, ये बंजर भूमि को हमने कैसे कैप्चर किया है, 45 डेज का प्रोजेक्ट लिया है। एक एक किसान को 45 डेज में, जहां पहले फोटोग्राफ में देख रहे हैं, उसके बाद 45 दिन के भीतर उसने अपना भूमि का सुधार किया है, पत्थरों को निकाला है। Here I would like to point out the understanding that NREGA has become very, very anti-machinery, at least in Madhya Pradesh. NREGA is not antithetical to use of machines. NREGA का एक्ट कहता है कि ऐसी मशीन जो क्वालिटी लाए और जो लेबर डिस्प्लेसिंग ना हो, उस मशीन को हम यूज कर सकते हैं। इस किसान ने अपने खेत का सुधार, भूमि सुधार में इतने वर्षों इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके खेत में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इन बड़ी बड़ी चट्टानों को वो हाथ से सिंगल हैंडेडली नहीं निकाल सकता था। हमने जो लेबर मटेरियल और मशीनरी का उसको स्टैंडर्ड मॉडल बना के दिया, उसमें हमने उसको ट्रैक्टर बेस्ड डीप प्लोइंग का और पत्थर उखाड़ने, कलेक्ट करने का ऑप्शन दिया। फिर उसने अपने हाथों से लेबर करके अपनी बंड या मेड़ बंधान का काम किया, एंड विदिन 2.5 to 3 months, ये लास्ट ईयर का एग्जाम्पल है, हमने काम शुरू किया था नवंबर में और जनवरी में उसके खेत पर ये तुअर की खेती उसने प्रारंभ कर दी थी। प्लीज नेक्स्ट।
दिस इज द सेम जय किसान, प्लीज नेक्स्ट नेक्स्ट। इसके बाद मेरा पीपीटी खत्म हो जाएगा। ये हमारी महिला स्व सहायता समूह के कैप थे, कुछ एक्स्ट्रा काम है। नेक्स्ट प्लीज। सोप पिट्स हैं, दिस वी ऑलरेडी डिस्कस, इनको आगे कर दें, सोप पिट्स तक आगे बढ़ा दें प्लीज। हमने बावड़ियों का भी संधारण किया है, और बावड़ियों का संधारण भी आगे बढ़ा दें प्लीज। आई डोंट हैव टाइम। ये स्टेप वाले हैं, सोप पिट्स हैं, ये सब पहले ही डिस्कस हो चुका है। मैं आप लोगों को डिले भी कर रही हूँ। हमारी बावड़ियां मिट्टी से पट गई थी क्योंकि इनमें किसी को भी सफाई करने का मोटिवेशन नहीं था। यहाँ सिर्फ नरेगा ही हेल्प आउट कर सकता था, इसलिए क्योंकि किसी भी कम्युनिटी एरिया में, जैसा कि राजेश्वर जी ने भी बार बार कहा कि सरकार की स्कीम है, सरकार ही करेगी, तो ऐसे में फिर हमारी एक आदत भी पड़ जाती है कि जब तक सरकार कोई काम ना करे तो हम नहीं करना चाहते। ये कम्युनिटी वाटर सोर्सेज हैं, नेचुरल एक्विफर्स हैं, जिनके आसपास, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत हिस्टोरिकली रिच एरिया है, यहाँ पे बहुत बावड़ियां हैं जगह जगह पे, तो हमने इनको आगे बढ़ा दें। इनके आप कहीं कहीं फोटोग्राफ्स में देखने मिलेंगे गाद से ढक, ये आप देखें, ये है कंपैरिजन। इससे पीछे वाला फोटोग्राफ भी प्लीज देखें। या ये आप देखें, बिल्कुल लेवल तक आ चुकी है और कचरा मिट्टी भर के ट्रेंचिंग ग्राउंड बन चुका था। हमने इन लोगों को भी खोद के, इसी साल का ये जो सेकेंड वेव वाला हमारा पैंडेमिक का टाइम था, हमने इस टाइम पे अपनी ऑलमोस्ट 147 बावड़ियां रिचार्ज कर ली हैं और रिवाइव कर ली हैं। वी हैव अ लॉट वे टू गो। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये बावड़ीज हैं सब। नेक्स्ट नेक्स्ट, बावड़ीज बावड़ीज, नेक्स्ट प्लीज। इनको फास्ट कर दें। ये कुछ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनको भी आगे बढ़ा दें, ये सब जगह बनते ही हैं। ये हमारा कपिलधारा कूप है जो पीछे गया। हम इस तरह के कुएं खेतों में बना के देते हैं लोगों को। ये काफी बड़े होते हैं, इनका 14 से 15 फीट का डायमीटर होता है, और अगर यदि एक कम्युनिटी में बनाए जाएं तो इनका पंप करके पानी देके मार्जिनल किसान को और महिलाओं को इसमें बहुत लाभ होता है। नेक्स्ट, ऑल कॉन्टूर स्ट्रक्चर्स, वी कैन क्विकली जस्ट फिनिश द पीपीटी हेयर। आई थिंक बस एक बार फोटोज ग्लांस हो जाएंगे जो काम किए जा रहे हैं उनके। गेबियन स्ट्रक्चर्स हैं, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। कॉन्टूर्स हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये कॉन्टूर्स हमने अभी शुरू किए हैं, वाइड डीप कॉन्टूर ट्रेंचिंग का काम शुरू किया है, क्योंकि एमपी में बहुत अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर कंजर्वेशन का हम बहुत एक्सटेंसिवली काम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड। नेक्स्ट। सो आप लोगों ने जो मुझसे एक्सपेक्ट किया था वो, उस पर मैं फिर से वही कहूंगी कि इन सारे कार्यों का चयन और प्रायोरिटाइजेशन, ये कितने रेलेवेंट है, इनका सोशल ऑडिट, इसमें महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। हम अपने स्तर से तो कर ही रहे हैं मध्य प्रदेश में, परंतु इसको एक्ट में, नरेगा एक्ट में बिल्ड इन होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot, Ms. Wali, for an excellent presentation on the issues facing the vulnerable groups like women, elderly, and disabled, and on the efforts that your state has made to increase their involvement in MGNREGS, not only for employment, but also for playing different roles, leadership roles, supervisory roles, and setting the priority for asset creation. They certainly need employment guarantee more than the others, and it requires close attention, as you said, and extra effort to ensure this. Normal efforts may not include them. So to really make MGNREGs inclusive, this kind of close attention, detailed planning are required. And your suggestions to bring in some amendments in the Act for making it women inclusive are important food for thought. It was quite informative and educative. Thank you. But now the matter is that we are running quite late, 1 hour and 30 minutes, around 30 minutes. So at least we have to continue for 1 more hour. I think such inspiring presentations will encourage us to continue. So we had planned to have a question and answer session now, but I think we should go for the panel discussion, and we'll then at the end of panel discussion, we'll have the question and answer session. Is that okay? Sahib? Yes, Manas. I think we have a couple of questions in the Q&A box, so we can. Okay. One thing that we can keep those questions as a point of discussion in the panel itself, or we can spend a couple of minutes to respond on those. So I think let's take up those questions. The panel discussion. Okay. 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 So you keep note of that and share them. So I'm taking note. Sure. Okay, friends. It is said that the sea, Samandar, is same for all, but some find pearls,
some find feces, and some just find their feet wet. So NREG as an opportunity is same for all, but so many things can be done with this. So we have heard some exciting experiences from 4 states, that how they have leveraged MGNREGs to address the needs of really very poor, needy people. And we'll now have a panel discussion on the opportunities offered by MGNREGs and how they can be leveraged in the coming years to transform the lives of poor and make the villages worth living. So let me quickly introduce our eminent panelists. Has Sunil joined, sir? Yes, Manas, I'm Hi. here. Good afternoon. Okay, hi, good afternoon. So we have Mr. R. Parsuram. Mr. R. Parsuram is the former Chief Secretary of Government of Madhya Pradesh and was also the Principal Secretary of Rural Development Department before that. It's not possible for me now to mention all his contributions to the development in the state in his long career in Indian Administrative Service. He is known to be a champion in people-centered development, that much I can say. And his contributions towards strengthening PRIs and women's groups and federations in the state are exemplary. He is a vocal supporter of the civil society efforts, and he is an active advocate of natural farming and ecological restoration now. So we look forward to hearing from you in the panel. Next, we have Muhammad Kasir Abdul Haq. He is the Commissioner, MGNREG Commissioner of Government of Chhattisgarh. He is a 2007 batch IS officer. He was the collector of Korba, Bijapur, Dantewada districts, and also the managing director of Chhattisgarh Power Distribution Company Limited. He is recognized for promoting innovations in the implementation of development programs like MGNREGs and NGGB, Narwa, Garwa, Ghurwa, Wadi. It's a unique program of the state that focuses on promoting conservation agriculture principles for sustainable farming system development. So it's a very new thing. So we look forward to hearing about it from him. He truly believes that improving lives of rural communities requires multiple actors, government, corporates, and CSOs to join hands and drive the change. We have Saroj Mahapatra. He is a member of the senior leadership team of Pradhan and integrates our operations in Chhattisgarh state. He has more than 25 years of experience of working with the state governments in both Jharkhand and Chhattisgarh for facilitating participatory processes in the implementation of development programs, major development programs. He has done extensive work on irrigation and integrated natural resource management, and he has provided thematic leadership on that in the organization and also in the sector. He was also there in the team that prepared the manual for Ministry of Rural Development for promotion of INRM under MGNREG in 2006 when it just was launched. UNDP had supported us and we had prepared the manual. He was also there in the working group for inclusive planning processes for village development plans, convergence of different flagship programs, and climate resilient interventions. Welcome, Saroj. So we have then Mr. N. Sunil Kumar. He is a strong advocate of climate action and a more sustainable world. He heads the NatWest India Foundation, previously known as RBS Foundation India. He has worked in NABARD and has served on the board of Regional Rural Banks, National Biodiversity Authorities Senior Expert Group. The NatWest India Foundation runs a dedicated program to increase forest cover and has, I think, plans to bring about 10,000 more hectares of land under green cover for carbon sequestration and livelihood generation. So we'll be happy to hear from our panelists. So we will start with Mr. Parsuram. So we really look forward to hearing from you how MGNREGs can be more effective in the coming years and contribute to promote ecologically sensitive ways of improving livelihoods. Thank you, Manas. Yes, I will come to the point that or the subject that you have assigned me. But okay. having listened to 4 commissioners from different states, including our own Sophia from Madhya Pradesh, and not
because there's paucity of time, so I'm not calling everybody's name once again. We now know in the last 2 hours we know each other's names and the kind of work we are doing very well. But let me say that all these 4 presentations encapsulated what's happening perhaps around the country. In these 4 states have a very good representative character: Karnataka, Madhya Pradesh, Jharkhand, and West Bengal. And we also have the commissioner from Chhattisgarh, and people like me who have spent half their life before the state was divided into 2 on the other side in Chhattisgarh. In fact, I say I've left my heart behind in Chhattisgarh sometimes, because I'm happy that the commissioner has also worked in 2 districts which were part of composite Bastar district, where I have spent a lot of time. I'm also grateful to you as well as to Mr. Narendranath in the beginning for saying nice things about me. Yes, I did get associated with MGNREGA in 2009 when I came back from Government of India. Between my stint in rural development Madhya Pradesh, all the other time in between was spent in the agriculture sector. So, whenever I think of MGNREGA or whenever I think of rural development programs, it all connects, of course, with livelihood, but also with agriculture and allied activities is something which can never escape my mind. So, given that, let me first say that a lot of good work is being done, and it's not in my place to review or comment on that. I would have definitely liked to appreciate in far more detail all the 4 presentations and the elements that they contain. There are a huge amount of initiative everywhere, but let me not go into it because there is paucity of time. And you had scheduled it from 11 to 1. So I have another appointment at 2 for which I have to drive for half an hour inside the city only, but it'll take me half an hour. But I thought by 1:30 it'll be all over, so I'll be there. So you may have to allow me to, after I say whatever I have to in the next 5 to 10 minutes. And with 250 participants, I apologize to all of them, individually to all of them, that this is something which was unanticipated. But given the fact that now all the 4 commissioners have situated where MGNREGA stands now, let me come to some questions for the future, if I may say. See, the first point I think is, and I used to say this while I was still in government service, that there was a world before MGNREGA and there's a world after MGNREGA. That is the kind of change MGNREGA has engendered in the rural areas in many ways, including in the way and I used to be part of the government, so we inside the government think about what should be happening in rural development. It did not happen in one day. People like me have gone through the evolutionary process which brought MGNREGA. I joined service when the year NREP was introduced in the country. Most of the youngsters wouldn't even probably recall the name way back in 77, 78. And then we had this gradual shift which brought us to MGNREGA. But MGNREGA is only, and let me allow me this indulgence, MGNREGA is only one of the programs, much as it's probably the most important program. So today, what is required is to see convergence in a much bigger way. And that's what MGNREGA commissioners and rural development departments in connection with other departments, including agriculture, animal husbandry, can do. We saw through in our presentations from the 4 states that a lot of such convergence is happening. The first question is it systemic? Or is it because of the fact that some collector, some deputy commissioner, some commissioner MGNREGA, some principal secretary rural development is putting in his extra energy to see that it works? So, and let's also accept a few realities. Government departments are organized vertically. Ministries in Delhi are looking at verticals. Somehow this responsibility of convergence has come down to the grassroots level. And I must say that civil society organizations or NGOs have done a tremendous amount of work
been bringing convergence, and having been associated with so many of them in the past, in service and after, I know for one how much energy goes in bringing in the convergence part. So one thing that needs to happen is how best can we institutionalize this? Because in the end, what will work and what will make rural income sustainable is that whatever good work is done actually stays and connects with others. Take MGNREGA, for example. Great work was done in the first phase when, or in the early days when I was associated directly. At that time, we were looking at individual, family, or individual denominated interventions. Then the next step came where we started looking at a village or a community. But that has happened partially. That hasn't happened in an institutional based form. I'm not saying it's not good things and haven't happened elsewhere in the country. So pardon me, I'm trying to generalize. So how can we bring in institutional underpinnings into this? Now, and we can connect with any resource. Take water, for example. Now, most of our interventions with water have been extractive in nature. Most of it. Now, how can we make it that, when we talk of water or any other natural resource, how can we make it A, adaptive, and B, restorative? So these are kind of initiatives which will require not only interventions which are family and individual denominated, but also in taking it to the landscape level or ecosystem level. Now, there is very little lead that has come from even the central government, I would say, and I can be a little critical here. I hope you are hearing me because the power has gone off in my locality. I am purely on hotspot. So you are very clear. Yeah. So, we are able to hear. So kindly bear with me. I think the image will be a little dull. So how can we make that? That's one part. The second part is that if MGNREGA, and Sufia and others before her pointed out about how they were trying to address the priorities of livelihoods through MGNREGA, which in any case is the most important element of the program of the act itself says that we have to provide guaranteed labor. And in the last 2 years, all states, by and large, in fact, I don't think there's an exception, have faced it quite admirably, this challenge of mitigating hardships arising out of COVID and out of the fact that they were returning migrants. Now, MGNREGA has to be actually part of the solution of several programs coming together, which can look at migration in two ways: the pull migration and the push migration. See, pull migration can be for better opportunities. And if all of us and our forefathers have come from villages, somebody else wants to go for better opportunity, nobody's want to hold him or her. But push migration is something which we need to look at. A. B, at least my feeling is that for a long time, I don't think this country is going to get urbanized in the manner that the world has moved. And technology is going to be a savior there, which means that a lot of people will have to be found, would love to live in smaller communities and find livelihood opportunities there, which means that rural areas in absolute numbers and in percentage terms are going to be very, very relevant in the Indian context. And how can we therefore make rural livelihood sustainable? That is one thing. The second is, there is no escape from connecting it with nature. Because all rural livelihoods, by and large, even the service sector economy in the rural areas, apart from agriculture, gets connected to nature. So therefore, whatever we are doing, that needs strengthening. How can we do it? And these are therefore more food for thought today rather than solutions, because we have to all work together to see how this can happen, how we can ensure sustainable rural livelihoods by taking nature into account. How can we design programs of convergence? How can we design programs which look at MGNREGA plus? And there are very good references. They came from Karnataka, Bengal, Jharkhand, and even in Madhya Pradesh, where NRLM initiatives were connected with MGNREGA. Reference was also brought in to talk about how
initiatives are taken about whichever beneficiary has already benefited from a program in animal husbandry or agriculture gets infrastructure provisioning from MGNREGA. What is now required is to see how some institutional basis is created for this, because nature is something which is now crying for help. Before I came back to rural development function in 2009, I was in an international appointment, and I came from the global to the local, as if, because MGNREGA had been just launched, so from global to local. And it's my firm belief that action is all local. So at the local level, how can we develop convergent models which cut across department lines, which rural development departments can lead and say that how through the Panchayati Raj system and with other stakeholders in the field can design and implement programs which have convergent action. I mentioned water. Water can be the driver. Changing cropping pattern can be another driver. Use of natural resources of the kind like pesticides or fertilizers will be a third driver. Making agronomical changes will be a fourth driver. Looking at soils will be a fifth driver. So how can we do this in a convergent manner? It is easier said than done, because we are all organized vertically, and we are, in the end, we are all also accountable for results within our own programs. But at the same time, maybe there is a room now with so much experience, with so much of initiative, with so much of dynamism that was witnessed today in the presentations of all the 4 commissioners, that the rural development departments and the MGNREGA section of the rural development department can provide the leadership, because you have the resources, you have the wherewithals. But so let's bring in convergence and see how nature can be put at the center and how nature-based solutions can happen. There's civil society today in India is vibrant about this. They're thinking about it. There are the coalition of civil society organizations who are looking at natural farming in a very wholesome manner, to see how mistakes which were committed during the Green Revolution, intentionally or unintentionally, most of the time unintentionally, how can they be rectified? So therefore, I think there is a need for a second dialogue after today's about how can we connect nature with livelihoods in a landscape denominated manner. And next would come restoration of ecosystem services, etc. But just for starters, how can we go from an extractive solution which we provide through our infrastructure to a much more restorative kind of thing, which means that if you like in Madhya Pradesh, let me come back to Madhya Pradesh. We ran the largest dug well program under MGNREGA from 2009 for several years to come in the country. Now, if you are extracting groundwater, and large number of them would have switched over to tube wells, now where is the water coming from? So can we look at, and rain-fed farming is such an important element in all the states, especially these 5 states. I will include Chhattisgarh also because the commissioner is there. How do we make it meaningful for people? And how can therefore better connect be achieved? I think the civil society organizations are uniquely placed, some of them, who can also make a huge contribution for designing such programs, which look at the convergence of MGNREGA, NRLM, watershed programs of the agriculture department and the other departments like animal husbandry. So which means that at the program design stage itself, in a cluster of villages, can we look at a cluster of villages which are either denominated on the landscape pattern or according to watershed or whatever? And then can we see that the focus is now on all these elements put together simultaneously to the largest extent possible. A paradigm shift will happen only gradually. It will not happen in a day or two or in a year or two. But can we push towards that? Can the other stakeholders be involved in this consultation? And what can they bring to the table? I see Mr. Sunil Kumar is here. So therefore, the range of stakeholders are here. How can we all come together and make this possible? Make this happen for the at least in pilots which are scalable.
So, so whatever has happened, 2009 I was talking of, and now it is 2021. The MGNREGA of 2009 is not what it has become in 2021, and it's such a good thing to have happened. Now, can we go to the next move, take on the next move to the next generation of interventions and marry MGNREGA and the other programs in a very, very solid manner with nature? And how can we do that? In wherever forest lands and revenue lands are involved, even today, if wholesome area-based solutions are talked about, there is no clarity about what can be done. So, and another dialogue is required with the forest department. It might have happened in some states. I'm not saying, I'm generalizing, because I'm sure all of you would, many of you might want to protest on something or the other, saying, no, we are already doing this. So kindly bear with me on that. So multi-stakeholder consultation is required to bring in nature-based solutions into our thinking, which makes livelihood sustainable even on a long-term basis, not just on a short-term basis. How can we do that is the point that we need to work in. Happily, all the technical know-how, like whether it is through GIS mapping or through other intelligence that we have, all that has come into place, and that can all help us. Only this little shift in thinking is required, and that leadership, that nudge, as one of our colleagues used the term nudge, so that nudge, made famous by the economist Thaler, who won a Nobel Prize for talking about nudge. See, that nudge, how can we work on that nudge and bring it to a push? And now if the same Thaler is talking about a lot of sludge in between. So how do we overcome the sludge? So in our context, it is nature, livelihoods, and sustainability. And in between, whatever sludge is there, it can be overcome. It can, उस sludge को हम, मैं ज़्यादा अंग्रेजी में बोल गया, समय कम था, साथियों से मैं क्षमा चाहूँगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हम मध्य प्रदेश में बराबर कहा रखते हैं, तो ये जो बीच की खाई है, उसको पाटने की ज़रूरत है. प्रकृति क्या दे सकती है हमें ग्रामीण क्षेत्रों में, देहात में, और हम उससे क्या लेते हैं? क्या इन कार्यक्रमों से हम दोनों को बीच की जो खाई बन गई है उसे पाट सकते हैं? क्लाइमेट चेंज अपने आप में बहुत बड़ा शब्द लगता है, हमें लगता है कि दुनिया में और बड़े बड़े हमारे नेताजी, माननीय प्रधानमंत्री जी और विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, वो सब इस पर ध्यान देंगे, लेकिन हमारी समस्या तो उस गांव की है, उस वाटरशेड की है. तो क्या हम वहां पर ऐसे कम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस बना सकते हैं, ला सकते हैं? इसके लिए क्या काम कर सकते हैं? तो इस तरफ बहुत से लोगों ने काम करना शुरू किया है, और अगर राज्य सरकारें इसमें लीडरशिप अपने हाथ में ले लेंगी, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही तेजी से और अच्छा काम होगा. इसके लिए इन बड़े बड़े कार्यक्रमों को रीडिजाइन करने की जरूरत नहीं है. इन बड़े बड़े कार्यक्रमों से मिल करके कन्वर्जेंट एक्शन कैसे हो सकता है, एक गांव में या समूह में, 100 किसानों में या 1000 किसानों के बीच में, या वहाँ जो लैंडलेस लेबर काम कर रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए. बाकी एस्पेक्ट्स पर मैं नहीं जा रहा हूँ. महिलाओं पर बहुत से साथियों ने काफ़ी जोर से बोला, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी बातें कहीं, जो कि खुद अपने आप में चुनौती है उनमें परिवर्तन लाना. लेकिन इस विषय पर हम आगे भी डायलॉग बनाएंगे. तो मनरेगा से अच्छा प्रकृति के इस टिकाऊ दोहन के लिए और कोई हथियार हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि लाइवलीहुड्स और प्रकृति के बीच में जो मिलाप है, वो मनरेगा, NRLM या SRLM जो भी आप कहें, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अन्य प्रोग्रामों से इकट्ठे हम कैसे ला सकते हैं, इस पर हम और आगे डायलॉग कर सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं. जहाँ तक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का समूह का है, प्रधान की तो तारीफ कई राज्यों से इस मीटिंग में ही हो गई है. मैं भी अपनी तरफ से उनका प्रशंसक हूँ. जिस मुर्गी पालन के बारे में अभी जिक्र आया था, सूफिया ने कहा कि उससे निकल करके आगे बढ़ गए हैं वो, मुझे इस बात की हमेशा मुझे गर्व रहता है कि उस कार्यक्रम को चालू करने में बघेलखंड में और बुंदेलखंड के जिलों में मैं उनके साथ था. और बहुत सारे, आज तो 250 से अधिक पार्टिसिपेंट्स हैं. बहुत से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से लोग आए हैं, सरकार के अंदर से आए हैं. उन सब के हम सब मिल करके इस परिवर्तन को ला सकते हैं.
मैंने आज बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स की बात नहीं की क्योंकि समय बहुत कम है और मेरा अपना भी एक लिमिटेशन है कि मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि 2 बज चुके हैं और जहां मुझे उनसे मैंने अभी मैसेज किया है कि भाई आधे घंटे की मुझे मोहलत दे दीजिए, उससे मैं बच नहीं सकता हूं। तो सुनील कुमार जी और हक साहब और महापात्रा जी, काइंडली यू विल हैव टू टेक ओवर फ्रॉम हियर, but I am most grateful to you for your patient attention, and my congratulations to all the young commissioners from all the 5 states for having brought so wonderfully well what great things are happening in your state. But my request to you is that kindly also do a little greater, or not little, some more reflection on how can we bring in more convergence into between programs so that sustainability, which takes care of livelihoods and the nature simultaneously, how can that go in hand? So let's maybe we'll have other opportunities to talk about this. Till then, thank you so much, and I'm most grateful to you, Manas, and to Sameer for your asking me to participate in this meeting. Thanks a lot. Very kind of you. Thank you very much, sir. Sorry for not managing time well and for causing the inconvenience to you. But we take your inspiring words that both people and planet have to be taken care of together. We cannot take care of one without the other. Thank you. Thank you so much. Sure. I would now like to request Manas. Yeah. I think Sunil is also supposed to leave. I mean, he has some other engagements. So can we all right now invite Sunil to share? Sure. Yeah. Okay. Okay, Sunil, I'd like to now request you to share your thoughts on reducing villagers' vulnerability to climate change incidences. So how MGNREGS can play a role in that in the coming years. Thanks, Manas. Thanks very much for accommodating the request. And I wish Mr. Parshuram was able to continue, but I will take the opportunity to call on him on another occasion. I will do that. I was able to hear the brilliant presentations by Ms. Faruqi and before that by Mr. Saha. I'm glad I was able to spend some time out there. I'm much inspired by the words said by Mr. Parshuram. We need to look at nature with a little more dispassionate and a professional approach towards that. There's a paper that I had written last month, and I'll share it with Sameer in case anybody is interested. I would like them to take a look at that. Now, climate change is something that has been dominating the newspaper headlines for the past several months, in addition to, of course, the pandemic and now Afghanistan. And we have been told that it's a matter of years before we breach the 1.5 degrees centigrade, by which time every one of us, 7 billion population on the planet, is going to be doomed. I'm sure we will not reach that stage of doom, but it's going to be difficult next 10 years for the entire world. But we also know that there are certain communities which are more vulnerable to the dangerous consequences of climate change. That includes small island nations, that includes coastal populations in our own country, and of course, it includes the rural communities in India, and more specifically, the drudgery of movement will increase. And again, those rural communities which are located in close proximity to the forests, where the land is, topsoil is thin, land is marginal, they are really, really vulnerable. I quickly recall a personal experience 2008, when I was very strongly smitten by India's ability to make forest carbon work towards climate change. And we actually embarked upon a very ambitious program in central India. It took off, we received host country approval, work started. It coincided with the economic downturn. While industrial carbon credits were actually ruling at $20 and the gold standards were actually garnering $30, nobody was willing to pay even $1 to the forest carbon. Of course, we were not able to generate that, but we started as a forward. And the objection that came was forest carbon is unreliable. There is no way to measure it. It has a very long gestation period. It has such a large scale of landscape that if we take a few samples here and there, that's not going to be indicative of what's going to happen in the entire landscape. And then the economic downturn resulted that the prices crashed. Now, fast forward to the current year, 2021, and I can share with everyone here that this year, as our own commitment of the group to go carbon neutral,
we purchase carbon credits and we purchase forest carbon credits at $20. Okay. And we have not done that as a charity. We have done that because our own investors and shareholders are asking us questions. How green are you guys? How responsible is your business? And this is the truth for every large business, every large business in the country, in the world. It does not appear so much in India, but in Europe, in US, unless the business is able to demonstrate that it's a climate responsible business, the investors are not going to touch them. And even the consumers are willing to pay a higher price for a green product rather than a sinning kind of product. Now, the consultants who are advising us have also told us that by 2030, the demand for carbon credits is going to be of the order of 8 to 10 billion carbon credits. And the supply is going to be between 1 to 5. And they projected that the prices for carbon credits is going to go 10 times. Now, let it not go 10 times. Let it stay at present rates of just $20 that we paid this year. That, I think, is a huge opportunity for our rural communities, especially those communities who occupy marginal lands with very thin topsoil, to be able to leverage MGNREGA, and if possible, in conjunction or in collaboration or in leverage with private funds, either the CSR or any other private investments, to create a community asset that will be a mitigation or an adaptation outcome, while it creates tremendous livelihood opportunities for the community. Now, if you are able to garner $20 per carbon credit, and I'm saying it with a little confidence because irrespective of how the compliance market is progressing, and compliance market is actually a minefield of red tape, the volunteer markets are really galloping fast. The demand for carbon credits in the voluntary market has really gone up. And these are the background which gave us the confidence to embark upon what I think Manas had referred to as at 10,000 hectares. Looks like we probably will be able to cover more than that, maybe even 20,000 hectares, targeting degraded forest lands typically outside protected areas, which are multiple use areas, and where we have a strong GFMs existing in most of the states, to use community action to bring these lands under a biomass through consultation of the community, whatever is their interest. If the land is fertile, they want to go for agriculture, yes, we'll go for agriculture. But if the land is not so fertile, topsoil is thin, we'll have to go for forest species. And Mr. Parsha made a point about nature. Yes. Increasingly, it has been acknowledged that climate change and nature deterioration or loss of biodiversity are not two separate problems. They are one problem, two parts of the same problem. Each has started feeding on each other. The increased greenhouse gases have severely impaired the ability of oceans to soak in carbon dioxide. The result is oceans have acidified, having a tremendous effect on both commercial as well as ecologically important species. Forests, when they're deforested on a large scale, become emitters, net emitters. Most nations do not like to concede the kind of forest cover that is being lost. But even with whatever has been actually acknowledged by various states, the UN estimates that 11% of global greenhouse gas emissions happen on account of deforestation. Okay, so I often say, and I'm quoting scholars, and it's not my own assessment, that a climate mitigation plan, which basically hinges upon deep cuts in emissions, can succeed only on the foundation of a robust and a resilient nature. And who is closer to nature than our own rural communities? They are the ones whose livelihoods is actually dependent upon soil, land, moisture, and often on the forests. So while there's a lot of vulnerability that I spoke about, I think there's a great opportunity that is coming by way of markets all over the world and consumers all over the world have started demanding and said they shall not do business with any business that is not green anymore. In fact, it actually picked up on the second anniversary of COP15, which was held in Paris, which was a landmark event. The next landmark event happened this year in Copenhagen, where Macron, the French president, had called a meeting of several CEOs. More than 500 CEOs had attended, and that is where they had actually committed to
managing their own carbon footprint, but it has picked up and built up a momentum from there on. So this in a nutshell is what I wanted to share. I'm aware of the paucity of time, but I'm happy to answer any questions. I know it's a panel discussion, but if Manas thinks appropriate to answer question, I'm happy to do that, because I myself will have to log in. I also requested for time from a meeting which started at 2 o'clock. Hopefully I can get into that meeting in a little while from now. So over to you, Manas. Thank you, Sunil, for telling us ways to avoid the doomed future. As you say, if you continue like this for next 10 years, it is bound to happen, but there are means to avoid it. Okay, so can we have any question for him now, if there is any from the audience? Otherwise he has to leave. Sahib? Sorry, I was on mute. So there is a very important question. I think we can take that up while we listen to the Chhattisgarh experiences. So one question is that what extent MGNREGA has actually helped the COVID crisis and the rural crisis during the COVID time in terms of generating employment, to what extent it actually helped. So that is one question. And no, I was asking if Sunil ke liye specific question hai, to no, there is no specific question I can see for Sunil. Okay, then we'll go ahead with the sharing by other panelists. Next. Okay, thank you, Sunil. Okay, thank you very much. My apologies. I wish I was able to stay along, but my apologies, and all the best to the rest of the event. Thank you very much. Thank you. Okay. I would now like to request Mr. Huck, MGNREGS Commissioner, Chhattisgarh. They have really gone for some very innovative projects in the state under MGNREGS, Mega Watershed Project and Narwa Gorwa Badi program. So I would like to request him to share the lessons from this and how they guide us to do things in future under MGNREGS kind of programs. Thank you, Manas. Thank you, Sophia, for giving us this opportunity to present ourselves before this esteemed gathering. Thank you all 4 commissioners who have presented their experience in NREGA. 2 things जिसके बारे में मुझसे कहा गया है कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं. सबसे पहले जो है मेगा वाटरशेड, जो हमने सिविल सोसाइटी के पार्टिसिपेशन से या कन्वर्जन से हमने नरेगा में करने की कोशिश की, एक ये, और एक नरवा गरवा गुरवा बाड़ी NGGB, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो एक महत्वाकांक्षी योजना है और जिसके माध्यम से हम लोग नरेगा में कुछ वर्क जो है छत्तीसगढ़ में कर. तो सबसे पहले जो है CSO का कन्वर्जेंस और पार्टिसिपेशन, मेगा वाटरशेड प्रोजेक्ट जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सी ब्रीफ में बता दूंगा. आई नो कि हमारे पास में टाइम की ऐसी भी कमी है. मैं कोशिश करूंगा कि जितना शॉर्ट में और जितना जो है कम समय में आप लोगों को मेरी चीज़ें जो है बता सकूं. हमने मेगा वाटरशेड का जो ये कंसेप्ट है या जो प्रोजेक्ट है, ये कंसीव हुआ था 2018 के अंदर. BRLF के साथ में मिल करके जो स्टेट गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था. चूँकि छत्तीसगढ़ के अंदर जो है एग्रो क्लाइमेटिक जो जोन है वो 3 है, नॉर्थ, साउथ और मिडल, मतलब जो एरिया है हमारा जो है सेंटर का जो पोर्शन है, ये 3 हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है. इन तीनों रीजन को ध्यान में रखते हुए हमने हर रीजन के अंदर जो है 4 इंटेंसिव ब्लॉक और जो है 4 जो है नॉन इंटेंसिव ब्लॉक, तो इनको आइडेंटिफाई किया था. और 3 हमारे मतलब जो है फोकस एरिया जो है वो 3 था. एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नो डाउट जो नरेगा का मतलब बेसिक कंसेप्ट है. सेकंड, एरिया डेवलपमेंट और अग्यूमेंटेशन ऑफ रिसोर्सेज. और थर्ड जो है मेन स्ट्रीमिंग और मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है कन्वर्जेंस ऑफ रिसोर्सेज. इन 3 बेस के ऊपर जो हम लोगों ने मतलब जो है इस प्रोजेक्ट को जो स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था. 13 ब्लॉक जो है इंटेंसिव ब्लॉक के रूप में हम लोगों ने लिया था और 13 नॉन इंटेंसिव, 26 ब्लॉक के अंदर जो है ये काम हम लोगों ने स्टार्ट किया था. और इसमें जो हमारी मतलब जो है NGO पार्टनर के रूप में जो है BRLF का एक्चुअली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था. और BRLF के साथ में एक्सिस बैंक फाउंडेशन, फोर्ट फाउंडेशन, और इसमें जो है 12 डिफरेंट जो है NGOs जो है और सिविल सोसाइटी जो है उनको हम लोगों ने चयन किया था.
उनके साथ में कंसल्टेशन के बाद में जो हम लोगों ने इनको मतलब जो है हमारे साथ में पार्टनरशिप में लिया था। और इन 12 जो है एनजीओ के लीड पार्टनर के रूप में जो है प्रधान जो है वो हमारे साथ में जुड़ी थी। और नो डाउट मतलब जो है प्रधान के जो है कंट्रीब्यूशन से और उनकी लीडरशिप से ही ये बाकी एनजीओज भी जो है हमारे साथ में जो है फील्ड में काफी अच्छी तरीके से काम कर पा रहे हैं और अपना मतलब जो है योगदान जो है मतलब इस ब्यूटीफुल मतलब जो स्कीम को रन करने में जो है वो मदद कर रहे हैं। 13 जो हमारे इंटेंसिव ब्लॉक थे वहां पर इन एनजीओ पार्टनर ने, इन सीएसओ ने जो है हमको बाकायदा जो है एचआर जो है उसके सपोर्ट से इनके जो है स्टाफ के रूप में जो है 10 से 15 जो है वेरियस मतलब जो है एक्सपर्ट और कंसल्टेंट और उनके जो है टेक्निकल जो है पार्टनर से जो है इनके साथ में मतलब जो है इन्होंने हमको मतलब एचआर के साथ में जो है हेल्प की थी। और जो नॉन इंटेंसिव ब्लॉक थे वहां पर इनका हमको जो है सिर्फ जो है एक सपोर्टिंग हैंड के रूप में या हैंड होल्डिंग के रूप में जो है हमारे नरेगा की जो ब्लॉक की जो टीम होती है, कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी समन्वयक, तकनीकी सहायक, इनके लिए जो है इन्होंने जो है हमको जो है सहयोग करने के लिए जो है इन्होंने हमारे साथ में जो है कमिटमेंट किया था। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो है हमारा मतलब जो है टारगेट था 1 लाख जो है फैमिली परिवार को जो है इन 26 ब्लॉक के अंदर जो है इनके लाइवलीहुड को जो है इम्प्रूव करना था। और एक्चुअली मतलब इनकी इनकम को जो है डबल करने का जो हमारा टारगेट था। इसी के साथ में जो है लैंड और वाटर ट्रीटमेंट का जो मेजर्स था उसमें मतलब हमारा जो है 7 लाख हेक्टेयर जो है इतने एरिया को मतलब ट्रीटमेंट करने का जो हमारा प्लान था। और इसी के इन टर्न जो है 3.5 लाख हेक्टेयर जो है हमारा जो है क्रॉप इंटेंसिटी को इम्प्रूव करने का जो है वो प्रोग्राम था। और पिछले जो है 3 सालों से बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है हमारा जो है चल रहा है। और इसमें अब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 लाख परिवार में से अब तक हमने बाकायदा मतलब जो है डेटाबेस मतलब बेसलाइन सर्वे किया था और मतलब जो डेटाबेस फील्ड से कलेक्ट किया था कि आज की डेट में इन परिवार की जो है इनकम का स्तर क्या है और आफ्टर मतलब कैसा है कि 2-3 इयर्स और क्या इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता, उसको साथ में लेकर के अभी तक जो हमारे पास में जो मतलब आंकड़े या जो डाटा है 70,000 से ज्यादा परिवारों ने जो है अपनी लाइवलीहुड को या अपनी इनकम को जो है इम्प्रूव कर दिया है। और उनके मतलब जो इनकम के अंदर काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, बल्कि इनकी इनकम इम्पैक्ट जो है वो डबल हुई थी। इसके अलावा हमने मतलब एन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है जो इनके रिकमेंडेशन के बाद में एक्चुअली होता ही है कि फील्ड में जो है हमारे मतलब जो एनजीओ पार्टनर है ये जो है सर्वे करते हैं एक एक विलेज के अंदर जो है नरेगा की क्या अपॉर्चुनिटी है, जॉब कार्ड होल्डर्स की क्या पोजीशन है, उनका मतलब लाइवलीहुड का स्तर क्या है, उनका मतलब जो है एग्रीकल्चर में मतलब वो लोग क्या चाहते हैं, उनकी मतलब चाहत क्या है, नरेगा से वो लोग क्या मतलब क्या करना चाहते हैं, कम्युनिटी का मतलब क्या है एक्सपेक्टेशन है, फिर वहाँ का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें मतलब अपना वाटर कंजर्वेशन कैसे हो सकता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैसे हो सकता है, सॉइल कंजर्वेशन कैसे हो सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके हमारे एनजीओ पार्टनर जो है एक एक जो है बेनिफिशियरी वाइज, एक एक नरेगा के जॉब होल्डर वाइज, एक एक ग्राम पंचायत वाइज जो है कुछ वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको जो है नरेगा की टीम को रिकमेंड करते हैं। नरेगा की जो टीम है, पीओ और हमारे तकनीकी जो स्टाफ है, इन पूरे मतलब इनके प्रपोजल को जो है नरेगा के गाइडलाइन के अनुरूप जो है हमारा टेक्निकल हमारी मतलब क्या हमारे लिमिटेशंस है या टेक्निकली हम नरेगा में कितनी चीजें दे सकते हैं, कितना काम इनको दे सकते हैं। और नरेगा से काम सेंक्शन के अलावा क्योंकि मैं रूरल डेवलपमेंट में भी मतलब जो है विभाग में भी काम देख रहा हूँ, तो इसके अलावा भी मतलब कैसा नगर जो दूसरे मतलब विभाग है जैसे लाइवलीहुड से रिलेटेड एनआरएलएम है, स्वच्छ भारत मिशन है, तो इनके भी मतलब क्या इंटरवेंशंस इन ग्राम पंचायतों में और इन मतलब बेनिफिशियरीज के लिए हो सकते हैं। तो ये प्रपोजल आता है, उसको मतलब लगातार टाइम टू टाइम हम लोग सैंक्शन करते हैं। और इसमें जो है नो डाउट इनके मतलब जो है पार्टनरशिप से जो है जैसा कि परशुराम सर भी बता रहे थे कि सीएसओस का जो है कंट्रीब्यूशन या उनके साथ में कन्वर्जेंस से नरेगा को कैसे आगे लेकर के जा सकते हैं, उसकी एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल जो है छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोगों ने सेट किया है। किसी के लिए भी एक केस स्टडी हो सकती है, बाहर से मतलब जो है अगर कोई व्यक्ति आ करके अगर देखना चाहता है जिन ब्लॉक में हमने मतलब इनके साथ में मिल करके काम किया है, तो मतलब बाकायदा मतलब फील्ड के ऊपर हम लोग मतलब इसका रिजल्ट भी देख रहे हैं और इसका इंप्रूवमेंट मतलब कैसे कर देखने को मिल सकता है। जो हमारा स्ट्रक्चर है मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया कि इसमें मतलब राइट फ्रॉम मतलब कैसा कर स्टेट का मनरेगा सेल मतलब जो है कमिश्नर नरेगा से लेकर के जिला पंचायत जनपद सभी को हमने मतलब इसमें इन्वॉल्व करके रखा है। जो हमारे सीओसोज हैं जो मतलब बीआरएलएफ और एक्सिस बैंक फाउंडेशन के अंतर्गत मतलब जो एनजीओ को हमने मतलब जो इसके अंदर अकोमोडेट कर रखा है प्रधान के लीडरशिप के अंदर या लीड एनजीओ के रूप में, तो उनके मतलब जो रोल मतलब जो स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा जो हमारे मतलब जो स्टेक होल्डर्स है खास करके मतलब जो है फार्मर्स है या मतलब नरेगा के लेबरर्स है और जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के जो हमारे प्रतिनिधि है, उनको भी मतलब किस तरीके से हम लोगों ने मतलब इस पूरे प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट किया है। इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, इनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही स्पेसिफिक हर लेवल के ऊपर नरेगा कमिश्नर का रोल क्या रहेगा, जिला पंचायत में डीपीसी का सीईओ जिला पंचायत का क्या रोल रहेगा,
एनजीओ पार्टनर्स का क्या रोल रहेगा, किसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, टारगेट ग्रुप क्या रहेगा, इस तरीके से इस प्रोग्राम को मतलब कैसे लेकर हम लोगों ने फ्रेम किया है। और इसके अंतर्गत मतलब हमने मतलब जो एक्टिविटीज जो है वाटर बजटिंग है, मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरीके से मतलब अपना लैंड यूज का मतलब जो उनका मतलब जो पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करके जो है वर्क सैंक्शन करना है, डीपीआर बनाना। इस तरीके से मेजर जो कंसिडरेशन हमारे मतलब जो इसके अंदर है वल्नरेबल फैमिलीज को मतलब जो है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे मतलब अपना उनका बेस लाइन करते हुए जो है नरेगा के इंटरवेंशन से या मतलब इस वाटरशेड प्रोग्राम से जो है इनकी लाइफ के अंदर जो हम लोग जो है तो चीजें इंप्रूव कर सकेंगे। ये पूरी प्लानिंग जो है जीआईएस मैप, जीआईएस बेस्ड प्लानिंग है, जैसा नरेगा एक्सपेक्ट करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मतलब जो नरेगा की जो स्कीम है वो जैसे मतलब कैसे कर स्टेट से या डाउन द लाइन ग्राम पंचायत से या नरेगा के इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियों से जो एक्सपेक्ट करती है, बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर एक एक मतलब जो है वाटरशेड को मतलब ध्यान में रखते हुए, उसमें आने वाली ग्राम पंचायत को ध्यान में रखते हुए, उसमें आने वाले बेनिफिशियरीज को, स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रख करके इसका मतलब पूरे मतलब अलग अलग लेयर के अंदर हम लोगों ने इसके मैप तैयार किए हैं और उन मैप के ऊपर मतलब कैसे लेकर हम लोग मतलब लगातार वर्क करते जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट है जिसको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने या नरेगा सेल ने जो टेकअप किया है प्रधान का और बाकी मतलब जो एनजीओ पार्टनर्स, इनका रोल बहुत अच्छा है इसके अंदर। और इसकी वजह से जो है एक सीएसओ का जो भागीदारी जो है इस नरेगा के इंटरवेंशन में हम लोग मतलब काफी हद तक इसके अंदर जो है सक्सेसफुल हो सके। सेकंड पोर्शन जो है मानस ने मतलब जो है स्पेशली जिसका मेंशन ड्यूरिंग माय इंट्रोडक्शन भी मतलब उन्होंने कहा था कि नरवा, गरवा और गुरुआ बाड़ी जो है ये एक्चुअली छत्तीसगढ़ की जो है होलिस्टिक बहुत बड़ी मतलब जो है एक रूरल इकोनॉमी को लेकर के और रूरल एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर को लेकर के बहुत ही महत्वाकांक्षी ये प्रोग्राम है। नरवा जो है छोटे जो नाले होते हैं उसको छत्तीसगढ़ी लोकल लैंग्वेज के अंदर नरवा कहा जाता है, जिनसे मतलब जो है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जो इरिगेशन खास करके बारिश के दिनों के अंदर मतलब जो है जो चैनल्स जो है इरिगेशन में हेल्प करते हैं उसको नरवा कहा जाता है। गरुआ पशु संसाधन या एनिमल हस्बेंड्री या लाइव स्टॉक से रिलेटेड जो है उसको गुरुआ कहा जाता है। घरुआ मतलब एक्चुअली जो मतलब जो है इनसे जो निकलने वाला गोबर है उसको मतलब अपना घरुआ मतलब यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है। और इसका मतलब उद्देश्य है कि जो एनिमल से जो गोबर हम लोगों को मिल रहा है उसको मतलब कैसे जैविक खाद में कन्वर्ट करके उसका उपयोग किया जाए। और बाड़ी मतलब सब आप लोग जानते हैं लोकल लैंग्वेज में इवन मतलब जो है पूरे इंडिया में जो है बाड़ी जो है इसी नाम से फेमस है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर से रिलेटेड जो स्मॉल वेजिटेबल्स और सब्जी भाजी या हार्टिकल्चर से रिलेटेड जो है क्रॉप्स का जो है प्लांटेशन किया जाता है। तो ये नरवा गुरुआ भाड़ी मतलब जो है इसमें जो एक्चुअली जो है जो नरवा जो है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो उसके लिए नोडल है, गरवा गुरुआ बाड़ी के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। लेकिन इन चारों के अंदर मतलब जो वर्क जो सैंक्शन हो रहे हैं उसमें मतलब नरेगा के जो अनुमेय वर्क है हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया है और उसी के माध्यम से मतलब कैसे लेकर इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। नरवा नो डाउट मतलब वाटर कंजर्वेशन नरेगा का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कैसे कर एक पहलू है, एक सेक्शन है। नरवा में मतलब हम लोगों ने जो है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर 30,000 से ज्यादा जो है नालों को आइडेंटिफाई किया है। ऐसे नाले जो मतलब कैसे लेकर गांव के बीच से, इसमें मतलब हमने अलग अलग लेवल के L1, L2, L3 और L4 तक के नाले लिए और उससे ऊपर के मतलब जो नदी नाले थे L4 तक के मतलब जो नाले हैं या जो उनकी कैपेसिटी है L4 जो कैटेगरी आती है इरिगेशन डिपार्टमेंट की, उसको हमने आइडेंटिफाई किया। और इसमें मतलब हमने करीब जो है 17,000 जो है माइक्रो वाटर शेड को जो आइडेंटिफाई किया और इसमें जो नाले बहते हैं तो कुल मिलाकर हमने पूरे छत्तीसगढ़ का एक वाटर शेड का एक पूरा प्लान और एक डीपीआर हमने तैयार किया है। हमने मतलब अपना हर ब्लॉक को जो है 3 पार्ट के अंदर मतलब हमने मतलब जो है प्रायोरिटाइज किया है। इस साल हम मतलब अपना एक पोर्शन लेंगे जो मतलब आपको मतलब जो है स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, येलो वाला, ग्रीन वाला और पिंक वाला। इस तरीके से हमने पूरे 30,000 नरवा को जो है अगले 3 सालों के अंदर ट्रीट करने का जो है वो प्लान किया है। इन नरवा के अंदर जो है 3 सालों के अंदर जो है हम लोग जो काम लेने वाले हैं उसमें जो है लाइन ट्रीटमेंट के अलावा जो है एरिया ट्रीटमेंट, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट के भी काम इसके अंदर लिए जाएंगे। पूरे नरवा को लेकर के एक डीपीआर बनाया जाएगा, जितनी पंचायतें उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होती है उनके हिसाब से नरेगा के अंदर मतलब वो अपने अपने एरिया के अंदर अपने अपने जो है वो काम उसके अंदर सैंक्शन करेंगे। ये स्कीम है इसके अंदर और हर प्रकार के मतलब जो है सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, वाटर टेबल को रिचार्ज करने के जो मतलब वर्क है, इन सब चीजों को मतलब ध्यान में रख करके डीपीआर तैयार किया जा रहा है। और हमने मतलब जो है इस साल हमारा जो है 10,000 डीपीआर तैयार करने का हमारा जो है वो प्लान है। इसमें जो है सबसे खास चीज जो है 5 जो हमारे मतलब जो इंडिकेटर्स हमने उसको आइडेंटिफाई किया है जो मतलब एक्चुअली जिसके ऊपर हम लोग आउटकम मतलब ना देखना चाहते हैं। सबसे पहले जो है ग्राउंड वाटर में जो है उसका जो है रिचार्ज जो है वो कितना हो रहा है उसका बेस लाइन लेकर के
इन नालों का या इंकेचमेंट एरिया के ट्रीटमेंट के बाद में इन ग्राउंड वाटर का जो है इम्प्रूवमेंट मतलब जो है वो कितना हुआ है, वाटर टेबल में कितनी मतलब वृद्धि हुई है। देन ओवरऑल मतलब जो है इस एरिया के अंदर जो है वाटर का मतलब जो है सरफेस वाटर की जो मात्रा है, तो इसको भी मतलब हम लोग मतलब इंडिकेटर के रूप में हमने आइडेंटिफाई किया है। और कोशिश ये है कि मतलब ना सरफेस वाटर हमारा मतलब ना ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो। देन ऑफ कोर्स नो डाउट सिंचित रकबा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है कभी भी वाटर कंजर्वेशन के कामों के लिए। फॉरेस्ट विभाग के मतलब जो है रिकमेंडेशन के बाद में हमने मतलब ना सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर्स है उसको नापने का और उसको मतलब जो है इंडिकेटर के रूप में लिया है, और इसी तरीके से मिट्टी के कटाव को, ये दोनों इंडिकेटर के लिए हमने मतलब फॉरेस्ट विभाग को मतलब नोडल बनाया। वो मतलब ना इन कैचमेंट एरिया में जब हमारा डीपीआर बनेगा तो सैटेलाइट पिक्चर से मतलब जो है सॉइल की नमी और मतलब सॉइल का जो मतलब संरक्षण है या मतलब उसकी इरोजन है उसको नापेंगे, और आफ्टर मतलब हमारे ट्रीटमेंट जो है क्या इंप्रूवमेंट हुआ मतलब उसको जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके आउटकम के रूप में मतलब देखें। तो ये नरवा का प्रोग्राम था। गरवा गुरवा बाड़ी के अंदर गौठान के रूप में मतलब हम लोगों ने मतलब कुछ कामों को सैंक्शन करने की कोशिश की है। पशु आश्रय जो नरेगा के अंदर जो काम होते हैं वो उसके रूप में हमने मतलब कुछ कामों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें जो है किसी भी मतलब गौठान के मतलब इर्द गिर्द जो है सीपीटी वाटर एब्सॉर्प्शन ट्रेंच जो है, और कोटना जो मतलब एनिमल्स के मतलब जो है खाने और पानी पीने के लिए जो जगह होती है, और साथ ही साथ मतलब नाडेप टंके हम लोगों ने मतलब यहाँ पर सैंक्शन किए। तो जो एनिमल यहाँ पर रहेंगे उनका गोबर मतलब निकल करके इन नाडेप टंके में जाएगा, और वो कैसे जो है कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट होगा, और वो खाद जो है मार्केट में मतलब जो है गवर्नमेंट ने उसको प्रोक्योर करने की गोधन न्याय योजना के माध्यम से जो एक स्कीम बनाई है कि वो खाद जो है वो अगर कोई खरीदना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर मतलब रेट के अंदर जो है उसको, और गोबर मतलब बाहर से भी अगर मतलब गोबर को अगर प्रोक्योर करने की जरूरत पड़ेगी तो ये गौठान जो हमारे मतलब गोबर प्रोक्योरमेंट के सेंटर है जहाँ पर गोबर की खरीदी होती है। तो इस प्रकार से नरवा गुरवा बाड़ी मतलब एक महत्वाकांक्षी योजना को नरेगा के साथ में हमने मिल करके लाइवलीहुड के मतलब पैसा नगर इंप्रूवमेंट में गाँव के जो लाइवलीहुड का एग्रीकल्चर का मतलब जो मेन मतलब इम्प्रूवमेंट है या एग्रीकल्चर के अंदर गांव वालों को जो है सपोर्ट करना है, तो ये पूरा प्रोग्राम हमारा है। तो ये 2 पॉइंट के ऊपर आपने मुझसे कहा था, तो मेरी तरफ से जो है इतने पॉइंट्स मतलब जो है या मतलब की बात मैंने आप लोगों के सामने रखी है। ये कुछ मतलब हमारी लर्निंग है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ जो हम लोग मतलब ना वे फॉरवर्ड या आगे हम लोग देखते हैं। इसमें से कई सारी चीजें जो है परशुराम सर ने मतलब अपने पॉइंट में मतलब बाकायदा मतलब बहुत ही स्पष्ट तरीके से उन्होंने बताया है। बाकी मतलब जो चारों कमिश्नर है उनके भी मैंने प्रेजेंटेशन के अंदर देखा कि मतलब उनका भी मतलब फ्यूचर प्लान किस तरीके से, तो ऑलमोस्ट मतलब ना उसी लाइन के ऊपर हमारी भी मतलब कुछ लर्निंग है। होप मतलब कैसा अगर हमारे मतलब ये जो वर्क है इसकी वजह से जो है बाकी जो साथ में जुड़े लोग हैं उनको भी कुछ मतलब लर्निंग या सीखने का मौका मिलेगा। नो डाउट मतलब ये पूरा मतलब जो आज का जो वेबिनार था मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ना हमारे मतलब ना सीखने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मतलब जो आप लोगों ने दी थी। बाकी 4 स्टेट के जो प्रेजेंटेशन फिर सर का मतलब जो पॉइंट सुनील जी ने रखा है, तो काफी एक अच्छी मतलब कैसा ना करे मेरे लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Mr. Haq, for this inspiring presentation. It is quite actually encouraging to see such initiatives taken by your state for doubling farmers' income as well as conserving resources, and at such a scale. Manas, yeah. Can we take just one question? I mean, there's a question from the audience. Sir, specifically for Mr. Haq? No, not specifically for Mr. Haq, but I think मैंने ये आप इस पैनल में ले सकते हैं। तो एक सवाल ये आ रहा था कि स्टेट में कन्वर्जेंस में मैंने हम बात तो करते हैं लेकिन काफी मुश्किलें होती हैं कन्वर्जेंस प्रोग्राम्स को लाने में, तो क्या प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में हम लोग ले रहे हैं, क्या अपना रहे हैं जिससे ये कन्वर्जेंस प्रोग्राम बड़े अच्छे से हो पा रहा है? सो देयर इज अ क्वेश्चन। कन्वर्जेंस में बिल्कुल मतलब जो है साहब ने मतलब बहुत ही सही पॉइंट रेज किया कि कन्वर्जेंस बहुत मुश्किल होता है। सबसे ज्यादा मतलब जो डिफिकल्टी जो है मुझे मतलब एज ए नरेगा कमिश्नर जो मैंने मतलब फेस किया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो काम करता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो अपना मतलब वेज का जो पेमेंट है या मतलब जो उनका अपना मतलब जो तरीका है काम करने का वो और नरेगा कई सारी जगह के पर जो मैच नहीं करता है, तो हम लोगों को वहाँ पर बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है। फिर मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट की अपनी मतलब जो है इनिशिएटिव अपनी प्रायोरिटी जो है डिफरेंट होती है, जैसे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। लेकिन पिछले मतलब 1 साल से हमारी कोशिश ये है कि हम लोग मतलब स्टेट लेवल के ऊपर भी कन्वर्जेंस की टीम बनाए, ACSRD की अध्यक्षता के अंदर वो कन्वर्जेंस की टीम है। और जब भी मेरी मतलब कैसे अगर APO के साथ में जो बैठक होती है तो उसमें भी हम लोग मतलब कोशिश ये करते हैं कि जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल के मतलब जो इनके नोडल ऑफिसर है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करे। तो हमने 4 मतलब विभाग को मतलब इसके अंदर जो है वो टारगेट किया है, जल संसाधन, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर और इसमें जो है
रूरल डेवलपमेंट, ये 4 डिपार्टमेंट के मतलब जो है हम लोगों ने एक मतलब सेल मतलब यहाँ पर बनाया है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि जल संसाधन विभाग भी ज्यादा से ज्यादा नरेगा के अंदर काम ले, और कोशिश ये है कि जहां पर उनके रिसोर्सेज जो है कम होते हैं, जैसे जल संसाधन विभाग का जो स्टेट का जो बजट है, अगर वहां पर मतलब कैसा नहीं कर उनको कहीं पर कमी हो रही है, तो नरेगा मतलब कैसा नहीं कर उसमें मतलब इंटरवीन करके जो है लेबर के फॉर्म में या मतलब जो है वेजेस के फॉर्म में अगर उनको कंपनसेट कर सके, तो उसमें हम लोगों को काफी मदद मिल रही है। उसमें मतलब जो है काफी सारे मतलब कन्वर्जेंस के काम जो हम लोग उसी कारण से मतलब ले पा रहे हैं कि कुछ मतलब मटेरियल मूलक मतलब जो काम है, जहाँ पे मटेरियल इंसेंटिव जो वर्क है वो लोकल रिसोर्सेज से कलेक्टर मतलब अपने मतलब रिसोर्सेज से, डीएमएफ के फंड से या सीएसआर के फंड से जो है वो उसमें कर दे, या विभाग अपनी स्कीम से। जैसे मैं अभी 2 दिन पहले ही मतलब इरिगेशन का एक मतलब अपना वर्क हम लोग देखने के लिए गए थे, तो उसमें करीब जो है 2 से 2.5 करोड़ रुपया मतलब विभाग ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अपने से लगाया है, और बाकी 1.5 करोड़ रुपया मतलब अपना नरेगा का मतलब एम्प्लॉयमेंट के अंदर और रोजगार के फॉर्म में हमने दिया है। तो दैट इज मतलब इन दिस वे मतलब वी आर प्रोग्रेसिंग एक्चुअली मतलब। Thank you so much, sir. Manas? Yeah. Yes, so I would like to invite now Saroj, who has extensive experience of utilizing MGNREGS as an opportunity to promote rural livelihoods. So I'd like him to share the lessons and some way forward, how this can be more meaningful for very poor families to have more income. Yeah, Saroj. Saroj, one more request. I mean, there are 2 other questions from the participants. If you can address those questions while you are presenting. One is that what extent MGNREGAs actually help the reverse migrants जो कि लॉकडाउन के समय वापस आए हैं और एक डिस्ट्रेस सिचुएशन क्रिएट हुआ था। दूसरा सवाल ये था कि डीएमएफ का किस तरीके से कन्वर्जेंस छत्तीसगढ़ में खास करके आप लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये दोनों स्पेसिफिक सवाल हैं, अगर इसके ऊपर में आप कुछ बोल पाए ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन। थैंक यू। Saroj, you are on mute. Okay. Am I audible now? Yes, yes. Okay. So basically मैं ये बोल रहा था कि परशुराम सर ने एंड देन 5 स्टेट का जो कमिश्नर हैं, तो काफ़ी अच्छे से एक ओवरऑल MGNREGS कन्वर्जेंस एंड देन ओवरऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स लेके बोले हैं. It was a quite learning experience for me. And I will focus mainly on this, how to ensure the convergence through bottom-up planning. जो साहिब का लास्ट क्वेश्चन था, उसका ऊपर में मेरा just I will share 3-4 slides only. Next slide. Next slide. Yeah. Next. अगर हम challenges देखेंगे लैंड एंड वाटर का, इट्स बहुत सारा स्टेट का प्रेजेंटेशन में था. लाइक इन द सेंट्रल इंडिया ट्राइबल बेल्ट, इफ यू सी द challenges in the context of land and water, the soil erosion is very high and the surface runoff is also very high. Next slide. Next. Yeah. So basically जो structures का बात हम लोग कर रहे थे, तो I think in Chhattisgarh and in most of the states we are adopting this approach. Like in the forest and hilly areas जहाँ पर काफ़ी सारा drainage lines हैं, तो इस तरीके का structures हैं. And then there are uplands, mediumlands, rivulets, lowlands. So various types of structures that we have designed for this Central India tribal belt. और छत्तीसगढ़ में काफ़ी स्पेसिफिक ये सब स्ट्रक्चर्स के ऊपर में काफ़ी सारा, जैसा कमिश्नर सर बोल रहे थे, काफ़ी इंटेंसिवली वी आर डूइंग वर्क इन छत्तीसगढ़ अराउंड दिस स्ट्रक्चर्स एक्चुअली. So the considerations है planning का, like convergence का first part is basically the planning part. Like we are taking the ग्राम पंचायत as a unit of planning. तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली कर रहे हैं कि माइक्रो वाटर सेट जो है उसको एक पार्ट ऑफ द ग्राम पंचायत मानते हुए ग्राम पंचायत का लेबर बजट को कंसिडर करते हैं. सिमिलरली जो इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव है, लाइक द रीच टू वैली अप्रोच, एट द सेम टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोपोज्ड लैंड यूज फर्स्ट रेदर देन लुकिंग एट द प्रॉब्लम कि ये जमीन अगर है तो उसमें क्या यूटिलाइज होगा
Then we are looking at the present land use and the problems of the land, and to mitigate the problem, what would be the proposed intervention. So this type of framework is being used in this at the family level and the area level, and integrating those with the water budgeting part. So हम लोग बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग यहाँ पर कर रहे हैं, like the progress hike and then technical assistant. So they are trained in around water budgeting actually. So water budgeting of Gram Panchayat is one of the major considerations in the INRM planning. Then we are prioritizing the small and marginal vulnerable households, like Sophia Madam was talking about this women, how to integrate the gender aspects into this. So वहाँ पर हम लोग prioritization वाला part में करते हैं. Then the documentation part, like the uniform baseline planning template, like in the entire state here, in all the 146 blocks, we are using the planning templates. So standardized DPR formats, and then very important aspects like vegetative cover and the structural measures are being incorporated in the planning format. So let me share ki how we are doing this convergence. जो साहिब का भी question था, basically this perhaps this slide will answer that question. Like in the program like NRLM, what we are focusing is basically the community mobilization part, and then here we are organizing the women into SHGs and काफी intensive handholding support and training दिया जाता है. Then we are planning the this resource development plot with the SHGs actually, like how to prepare the perspective plan of the village around this land and water, and then composting, biomass, then poultry shed, goat shed. So various types of structural measures are being done through MGNREGS. Then once the assets are being created, then the post assetization part, like the productivity enhancement part, तो वहाँ पर काफी intensive यहाँ पर CSO का involvement रहता है, and the agriculture department is काफी intensive involvement इसमें रहता है. So basically the convergence is required to increase the effectiveness of both the program and to increase the influence of the lives of the poor actually. So I think this is one example of this NRLM, MGNREG and agriculture program. At the same time, you were asking about the DMF actually. So यहाँ पर जो हुआ है काफी सारा districts में, like the district like Bastar and Dantewada, तो वहाँ पर क्या हुआ है कि जैसा एक resource development plan जब बनता है, मान लीजिए कि some of the material component, like for example micro lift irrigations, so it requires lots of material component and this cannot be done under MGNREG. तो वहाँ पर क्या होता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है, लाइक क्रेडा से रिन्यूएबल पंप सेट, रिन्यूएबल एनर्जी का काफ़ी सारा हम लोग काम कर सकते हैं, एंड देन PMF से पाइप का काम होता है. तो इस तरीके का डिफरेंट प्रोग्राम्स का कन्वर्जेंस ये ग्रास रूट लेवल में होता है. लाइक जैसा सर बोल रहे थे कि स्टेट लेवल में देयर इज अ कन्वर्जेंस कमिटी, बट एट द सेम टाइम एट द ग्रास रूट लेवल द चैलेंज इज हाउ टू ऑर्केस्ट्रेट द कन्वर्जेंस एट द ग्रास रूट लेवल. तो मेनी टाइम्स द परशुराम सर इज ऑलरेडी टोल्ड कि लाइक it should not be very much person specific actually. इसको institutionalize कैसे करें, I think that there lies the challenge. तो बस्तर में काफी सारा CSOs का involvement में litigations with the DMF fund and then RKVY ये सब fund से किया गया है actually. So let me share one example, like in the year 2007 ये गांव का मैप है. यहाँ पर देखेंगे only there were 4 water bodies. And in the year 2018, if you see the after interventions, so there were 27 water bodies. Water in hectare meter, like next. Yeah. So near about 10 times increase in the storage capacity. At the same time, the area under the double crop is around 15 times. And all the 18 farmers are doing the fish steering in those farm funds. So like again, it's a example of convergence actually. So यहाँ पर भी agriculture and fishery department का काफी large scale convergence है once the assets are being constructed under MGNREG. And all those farmers are actually the Lakpati farmers in this village. Next. So this is one example of how this convergence has helped this individual household. If you see the individual household, like Kumari Bai is this name of this woman SHG member. तो यहाँ पर 2016 में वो migrant labor के हिसाब से काम करते थे. Around the year food sufficiency was the major challenge. So she largely dependent on PDS and wage labor actually.
बट इन द ईयर 2020 यहाँ पर क्या हो कि इन द मीन टाइम काफ़ी इंटेंसिव प्लानिंग हुआ MGNREGS, प्रधान एंड देन रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ में प्लानिंग हुआ. फार्म पॉन्ड, लैंड लेवलिंग, पोल्ट्री सेट, डॉग वेल्स उसका एरिया में हुआ है. अगेन थ्रू द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड ट्रेलिस एंड SRI वेजिटेबल्स कल्टिवेशन हुआ है. एंड एट द सेम टाइम फिशरी एंड बैकवर्ड पोल्ट्री ऑल्सो ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से कन्वर्जेंस से हुआ. So if you see the income actually over a period of last 5 years, so now she is getting near about 1.83 lakh rupees. And ये बोले हैं कि कोविड-19 के टाइम में जब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी था बहुत सारा जगह में, बट इनके लिए कोई फूड ग्रेन्स अवेलेबिलिटी एट द डोर स्टेप ये कोई इशू नहीं था. और एंटायर फैमिली वाज ए फूड सिक्योर्ड फैमिली एक्चुअली. तो दिस इज द लास्ट स्लाइड एक्चुअली. तो यहाँ पर काफ़ी सारा पॉइंट्स ऑलरेडी प्रीवियस प्रेजेंटेशंस में कवर्ड हुआ है. तो आई थिंक द फर्स्ट पॉइंट इज लाइक एरिया डेवलपमेंट. तो यहाँ पर हम लोग जैसा जो मेगा वाटर सेट प्रोजेक्ट हुआ है दैट टॉक्स अबाउट अ वेरी लार्ज एरिया एक्चुअली. इट टॉक्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अराउंड 7 lakh hectares of land. Similarly, in the West Bengal, in the Usar Mukti project, they also talk about this area development. So I think this area development and resource segmentation is the most critical part. And second part is the integrated approach is very much required to increase the carrying capacity of the area and to also the sustainable use of the natural resources that Parshuram sir was also talking about. So I think this is the second point that we can focus. And third part is basically the local and micro level solutions are very important, but at the same time, we should talk about a scale actually. Like in the mega water set project, we are talking about near about 1 lakh households to be covered. And at the same time, bigger frame में इसको देखने का जरूरत है. Like जो सेंट्रल इंडिया ट्राइबल बेल्ट है, तो वहाँ पर जिस तरीके का लैंड का टोपोग्राफी है एंड देन वाटर रिसोर्सेज का पॉसिबिलिटीज है काम करने का. तो आई थिंक वी नीड टू इंटरवीन एट अ वेरी लार्जर स्केल एक्चुअली. एंड फॉर दैट MGNREGS इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लैगशिप प्रोग्राम जहाँ पर नियर अबाउट लास्ट ईयर में 1.12 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था. एंड दिस ईयर द बजट इज अराउंड 73 लाख करोड़. So in the state like Chhattisgarh, it's more than 3,000 crores actually. So if you see the investment in natural resource management, it's around more than 80% actually. So I think this type of possibilities are there in MGNREGS. So the integrated approach would talk about the restoration of degraded soils, in situ water harvest, and then intensification and diversification of farming actually, so that it will have impact on the human conditions actually. So it's not only talk about the prosperity, but gender, nutrition, and nutrition security, and then all those aspects can be integrated actually. ये भी हम लोग का लर्निंग है कि जैसा एक जहाँ पर काफ़ी अच्छा इरिगेशन का काम होता है थ्रू MGNREGS एंड अदर सोर्सेज, और उसका अराउंड में बहुत इंटेंसिव अगर एग्रीकल्चर प्रमोट होता है, फार्म बेस्ड लाइवलीहुड्स होता है, तो इट इंक्रीजेस द इनकम लेवल ऑफ दैट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर टू ए सब्सटेंशियल लेवल एक्चुअली. एंड फॉर दैट the convergence between large variety of stakeholders is very much important. Like ये भी होता है कि जैसा कोई अकेला stakeholder से entire area का changes करना it will be very difficult. But if we can converge the major flagship program like NRLM, MGNREGS, Agriculture Department, Forest Department for better land use and income, then it would create a winning coalition among the women collectives promoted under NRLM, the panchayats, the civil society organizations, and the government department. And this is required for bringing a long-term change actually. And for doing all this, the CSOs can be involved in this training and capacity building. So how to involve the good CSOs in planning, implementation, training, and handholding support, and post-asset livelihood creation phase. I think if we can involve those through different programs, so then the entire program would sustain in a long run. So I think these are some of the learning that we had during the past 10 to 15 years. So thanks a lot for giving me the opportunity. Is there any questions? So I think Sahib, I have answered the DMF part. And yeah, for both the questions you have answered brilliantly. I mean, both the questions. No, the first part was basically the COVID part, and COVID part में जो हुआ है काफी intensively लोग यहाँ पर काफी सारा policy level का circular issue हुआ था, like focusing on individual benefiting schemes
एंड जहाँ पर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर पाएंगे, एट द सेम टाइम फोकसिंग ऑन द वल्नरेबल हाउस होल्ड्स। और काफ़ी सारा जगह में यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट में कैश पेमेंट का भी प्रोविजन किया गया था, बिकॉज द LWE डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम था एक्चुअली, बैंक का एक्सेस का ये सब का प्रॉब्लम था। तो इस तरीके का स्टेट में काफ़ी सारा एनेबलिंग पॉलिसीज़ को इंक्लूड किया गया था। एंड इनफैक्ट लास्ट ईयर में इन स्टेट लाइक छत्तीसगढ़ वहाँ पर हाइस्ट परसेंटेज पे जनरेट हुआ था। तो MGNREG एक्चुअली काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया था टू रिवाइव द रूरल इकोनॉमी, एट द सेम टाइम द रिस्टोर द रूरल इकोलॉजी एक्चुअली। तो आई थिंक टाइम का थोड़ा कंस्टेंट है so I would love to answer all the questions, and then Commissioner sir is also there, so we can answer the questions actually, if any. There are a lot many questions. Just that want to pick one question is that Shijal, you are talking about working with self-help groups, and they are supposed to lead the entire planning process and the ground implementation process. And the other way to look at the program is, do you see a kind of contradiction, or where is the convergence between these SHG group led processes and Gram Panchayat led process? So for the entire panel, not exclusively to this panel. I think as far as my understanding is concerned, so वहाँ पर कोई contradiction नहीं है. So I think SHGs and PRIs का अगर एक collaboration हम लोग grassroots में orchestrate करें, so that would be a win-win situation. And fortunately here the Commissioner MGNREG and Director Panchayat is the same person अभी तक थे, अभी जो सर recently change हुए हैं, तो ये काफ़ी उस तरीके का convergence में कोई issue नहीं होता है. But challenge is how to orchestrate that convergence at the grassroots level. ये थोड़ा this is a potential conflict actually, but I think we need to deal with this very strategically. Yes, Manas, over to you. I think we are not in a position. You are on mute, Manas. Manas, you are on mute. So it's already 2:45. So if there is any other question, we can ask it. Otherwise, we have to, I think, conclude. Yeah, so you're really running short of time. I think yes, already most of the questions. So one thing we definitely could do is that the key learnings coming out of these sharings, we can put this together and prepare a kind of very brief note, so that yes, it with all the participants. And some have requested if the presentations can also be shared. Yeah, so that we are doing. Okay. Thank you. So this brings us to the end of the webinar. I hope, and one time I saw that there were around 242 participants. Now, even though it has reduced, so I hope all of us found the presentations and panel discussion extremely helpful and stimulating. At least for me, it was a privilege to attend today's session and listen to the commissioners on the extraordinary work that they are doing under MGNREGS. And the takeaway are, I'm just briefly in one sentence, I'm saying 3 things: multi-stakeholder approach, convergence of government programs, attention to the vulnerable groups. These 3, I think, will help us to create a much better village or world to live in. I think that is what I took away from the event. So I, on behalf of the Madhya Pradesh State Employment Guarantee Council and Pradhan, extend a very hearty vote of thanks to all the presenters, panelists, and all of you who are attending it, for taking the time to be here with us, for making this event so very meaningful. Thank you. Thank you, Manas. Thank you everyone for joining and taking time out of the schedule. So I'm closing this platform, Manas. Huh? Okay.